डाइवर्सिटी फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं और एक साल का जो पूरा प्रोग्राम है बाहर है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जिन दो दोस्त जिनसे मैं पहले नहीं मिला, मैं IRC क्या है, इंटरैक्टिव रिसोर्स सेंटर क्या करता है, थोड़ा सा बता दूं। IRC इंटरैक्टिव रिसोर्स सेंटर इज़ ए इन्फो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आर्ट बेस्ड टूल्स को हम सोशल मोबिलाइजेशन, प्रमोशन ऑफ सोशल इश्यूज, ह्यूमन राइट्स पे करते हैं। वी स्टार्टेड विद थिएटर, और थिएटर का भी इंटरैक्टिव थिएटर से शुरू किया था जो नॉन एक्टर्स के साथ होता है, जहाँ कम्युनिटीज़ को आप एंगेज करते हैं और एक नई स्पेस क्रिएट की जाती है स्पेक्ट एक्टर की, कि जो इशू को आप एक जगह पे ला के लोगों को उसमें शामिल करते हैं और एक इंस्टेंट डायलॉग वहाँ पे शुरू होता है कि हाउ टू गो हैड विद दैट। वहाँ से जब चलते हुए हमें आगे समझ आई कि मीडिया को साथ लेना है, तो फिर आपने कम्युनिटी में कैमरे बांटे, कुछ कम्युनिटी फिल्म मेकिंग शुरू की, जो बढ़ते बढ़ते सिटीजन जर्नलिज्म तक आई। यू आर वर्किंग विद 7-8 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी करते हैं। और 2012 से यू आल्सो स्टार्टेड योर फर्स्ट वेब टीवी, जो कि माटी टीवी के नाम से हर महीने में 8 फिल्म्स और 4-5 लाखों तक हमारा एक सर्कल बनता है। और उसके अलावा ये इनिशिएटिव था कि हाउ वी कैन हेरिटेज को, कल्चर को, म्यूज़ियम को, फोक आर्ट्स को कैसे लेके चलते हैं। तो ये IRC, स्मिथसोनियन और US एम्बेसी से की सपोर्ट के साथ हमने ये किया। इसमें हमने जो आज आप देखेंगे, डॉक्टर फौजिया इसकी डिटेल बताएंगी। आज का जो इवेंट है इसकी थीम स्टोरी टेलिंग है, फोक स्टोरी टेलिंग है। उसमें आगे डिटेल्स क्या हैं वो मैं डॉक्टर फौजिया पे छोड़ता हूँ। आप सबके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। अच्छा जी, मैं दोबारा से ज़रा सा फिर से आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बात करूँगी। ये फिल्म का टेबल है, यहाँ हमारे ज़बरदस्त किस्म के, समीना आप भी इधर ही ज्वाइन करो। ये इस वजह से हम कर रहे हैं, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन इस वजह से हम कर रहे हैं कि नेटवर्किंग इज़ अ मेजर ऑब्जेक्टिव हियर। तो आपके अपने अपने फील्ड के होंगे तो आप मुलाकात ज़्यादा उनके साथ कनेक्ट कर सकोगे, मगर आप टेबल जंपिंग, टेबल हॉपिंग करें ज़रूर और इधर उधर दूसरों से भी मुलाकात करें। थोड़े से मैं इस हमारे इकट्ठ के ऑब्जेक्टिव्स बताऊं। हमने स्टोरी टेलिंग इसलिए लिया था, फोक स्टोरी टेलिंग, क्योंकि हम जो ऑर्गेनाइजर्स हैं हम फोक कल्चर के लोग हैं, और स्टोरी टेलिंग एक ऐसी चीज़ है कि जो क्रॉस कटिंग चलती है। वो चाहे आप एकेडेमिया में हों, आजकल अगर आपने स्टूडेंट्स को एंगेज करना हो, चाहे आप बिल्कुल हाई फ्लाई इंटरनेट की आप बड़ी शार्प किस्म की 60 सेकंड्स की चीज़ें बना रहे हों, या आपने हमारी लोक दास्तानें और फोक बैलेड्स जो हैं उनको आपने डॉक्यूमेंट करना हो, ये एक क्रॉस कटिंग थीम है जिसमें हमारे बहुत सारे फील्ड्स आ जाते हैं। तो इस पे हमने फोकस किया है, और हमारा एक ऑब्जेक्टिव ये था कि सारे सूबों से जो कल्चर वाले हैं उनको इकट्ठा करें। इस वजह से चाहे वो गवर्नमेंट के साथ हों, चाहे वो एकेडेमिया के साथ हों, चाहे वो सिविल सोसाइटी से हों, बिकॉज़ आपस में मिलना और आपस में कनेक्ट करना इज़ वन ऑफ मेजर ऑब्जेक्टिव आल्सो, ताकि हम लोग एक जो कम से कम कल्चर की कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना, वो कंपटीशन पे इतनी ना हो, कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन पे हो, एक दूसरे का साथ दें। निगलेक्टेड सा एरिया वैसे भी, फील्ड थोड़ा निगलेक्टेड है, क्रिएटिव फील्ड्स वैसे ही आजकल ज़रा निगलेक्टेड रहते हैं। तो उसमें हम अगर कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन वाले मॉडल पे ही शुरू करें तो वो बेस्ट होगा। थिएटर ग्रुप और दूसरा थिएटर ग्रुप compete करने की बजाय एक दूसरे को सपोर्ट करे, दैट इज़ व्हाट वी वांट। तो ये जल्दी से मैं आपको 2-3 लाइनों में बता देती हूँ। आपके पास प्रोग्राम आ गया होगा, आप लोगों ने अपना अपना बैग ले लिया होगा, उसमें बेसिकली प्रोग्राम रखा हमने 5 हिस्सों में। हमने इस कॉन्फ्रेंस को 5 थीम्स कह लो रखी हैं: स्टोरी टेलिंग थ्रू म्यूजियम्स, स्टोरी टेलिंग थ्रू मदर लैंग्वेज, स्टोरी टेलिंग थ्रू म्यूज़िक एंड सिंगिंग, फिर कल के दिन में होगा स्टोरी टेलिंग थ्रू फिल्म्स और स्टोरी टेलिंग थ्रू थिएटर। तो एक बड़ी ज़बरदस्त सी फिल्म भी कल हम आपको दिखाएंगे जो ज़रा सरप्राइज़ है। सो दैट इज़ हाउ इट विल गो, ठीक है। सो इतना इसको हम हार्ड एंड फास्ट नहीं रखना चाहते, ताकि इंटरैक्टिव इंगेजिंग रहे। और ये जो कुर्सियों का सेटअप है ये भी इट इज़ नॉट द यूजुअल कॉन्फ्रेंस सेटअप, तो ये भी ख़ास तौर पे हमने इसलिए किया है कि नेटवर्किंग, आपको ये याद रहे कि इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, कि आप आए हो तो यहाँ से जो लेकर जाओगे वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सेशन के जो स्पीकर्स हैं सिर्फ उनसे लेकर जाओ, मगर एक दूसरे से बहुत कुछ लेकर जाओगे। और इसको हमने जिस तरह से कई दफ़ा कॉन्फ्रेंसेस में पैरेलल सेशंस होते हैं, बड़ा कॉन्शियसली हमने उस तरह नहीं किया,
वरना हम यहाँ 3 हॉल्स में 3 तरह की, तो फिर आप सब स्पीकर्स होते। लेकिन हमने इसके कैपेसिटी बिल्डिंग ज़रूर इसका ऑब्जेक्टिव है, मगर 2 तरह से। एक जो आप सुनोगे बात दूसरों से स्टेज से, और एक जो आप बात सुनोगे एक दूसरे से। सो ये दोनों लेवल्स के ऊपर कैपेसिटी बिल्डिंग चलेगी। सो इस पे कोई सवाल जवाब तो नहीं? ठीक है। ऑन लॉजिस्टिक्स साइड सारे आपके लंचेस डिनर जो हैं वो वहाँ पर बाहर होंगे पानी के पास, ठीक है। अच्छा, अब हम चाह रहे थे कि इसको शुरू जो है, क्योंकि फोक एपिक्स का ही स्पिरिट लेके चलेंगे, तो इसकी शुरुआत, ये आई होप कि कोई स्पेशल सिग्नल ना हो मेरे लिए, इसकी शुरुआत हमने सोचा कि एक ऐसे कलाम से किया जाए जो आप सबको मेंटली एक ख़ास फ्रेम में ले जाए। फ्रेम ऑफ माइंड जो होता है ना, वो शिफ्ट हम कर लें। तो मैं बुशरा सादिक से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो आएँ। आपके उस्ताद आ गए, वो जो हारमोनियम पे साथ देना नहीं है? अच्छा, ऐसे ही फिर आप आ जाइए। मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की थी कल। अगर आप थोड़ा सा वेट करना चाहें तो वेट कर सकते हैं, जब तक हमने 1-2 और लोगों से बात करनी है। हाँ, फिर उसके बाद हम अपना ऑफिशियल शुरुआत कर लेंगे। और यहाँ वकास आप ज़रा सा फ़ोन करके फॉलो अप कर लीजिए, ठीक है, भूरालाल साहब से। अच्छा, अब हमारे इसमें जो पार्टनर्स हैं, आईआरसी जो है, जैसे वसीम ने कहा, वो इंटरैक्टिव रिसोर्स सेंटर, थिएटर, फिल्म, एक्टिविज़म, कल्चर, ये सारे उनकी कोर थीम्स हैं। और जो यूएस एम्बेसी से, कल्चरल फोरम से, जिन्होंने हमारा साथ दिया, जो सपोर्ट कर रहे हैं सारे इनिशिएटिव को, असफर यहाँ पर हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो आके चंद अल्फाज कहे, जस्ट सो दैट वी कैन थैंक यू ऑल्सो फॉर सपोर्टिंग अस। हमारी बिरादरी के ही हैं वैसे ये, चाहे वो यूएस एम्बेसी के साथ है, कल्चर वाले हैं ना। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और जैसे फौजिया ने कहा हमारी बरादरी के हैं, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। इस 20 साल के सफ़र में कल्चर को एक्सप्लोर करते करते मुझे ये समझ में आया कि पाकिस्तानी होने का जो रिश्ता है, उससे भी ऊपर एक रिश्ता है, वो हमारा कल्चरल रिश्ता है। और फिर उसके बाद बहुत सारी और भी आइडेंटिटीज़ होती हैं। कोई यूएस एम्बेसी से है, डॉक्टर फौजिया हैं, इनके इतने सारे मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशन से जो हैं वो मरासिम हैं, रिलेशनशिप्स और एसोसिएशंस हैं। तो मैं समझता हूँ कि किसी एक इदारे से एसोसिएट करना, लिमिट करना होता है, स्पेशली अगर आप कल्चर की बात करें। और मैं शुक्रिया अदा करूँगा आईआरसी का, वसीम भाई, उनकी सारी टीम, बहुत सारे लोग जो कि पिछले प्रोजेक्ट में थे। उसकी ज़्यादा डिटेल डॉक्टर फौजी आपको बताएंगी कि हमने एक प्रोजेक्ट 3 साल पहले शुरू किया और उसके ऊपर फिर इस प्रोजेक्ट को बिल्ड किया। और स्मिथसोनियन से जो लोग, स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट से जो लोग हमें कनेक्ट करेंगे, उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया और हमें यहाँ तक पहुँचने में मदद दी। और ये बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत सफ़र है। इसकी डिटेल्स आप देखते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम एक्सप्लोर करेंगे अपने सेशंस को। स्टोरी टेलिंग आपने नोटिस किया होगा कि एक ओवर आर्चिंग थीम है, और उसका मकसद ये है बेसिकली कि आज के इस वक्त में जो कि बड़ी तेज़ी से गुज़र रहा है, अटेंशन स्पैन बड़ा कम है, बहुत सारे डिफरेंट मीडियम्स हैं, तो उसमें पाकिस्तान में मौजूद सच्ची और असली कहानियों को उनके अपने आप के अंदर पेश करना जो है, मैं समझता हूँ बहुत ज़बरदस्त एक ज़रूरत है। और उसमें आईआरसी ने और इस प्रोजेक्ट ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया जो कि आए, कुछ शॉर्ट नोटिस पे और कुछ बड़े पैशन के साथ शुरू से साथ हैं। तो इंशाल्लाह आज इसके साथ कंटिन्यू करते हैं और आपसे मुलाकात रहेगी। मुझसे प्लीज़ ज़रूर मिलिएगा आप लोग। अगर मैं किसी से मिलना मिस कर दूँ तो प्लीज़ कम टू मी एंड टॉक, और अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करें, अपना काम एक्सचेंज करें। बहुत सारे गुरुज़ नज़र आ रहे हैं, उस्ताद नज़र आ रहे हैं, उन सबको मेरा आदाब। और उन तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने पाकिस्तान के कल्चर को प्रिजर्व करके, वो वर्ड है सेंच के रखा है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, अभी हम जैसे अपने म्यूजिशियंस का वेट कर रहे हैं,
तो अगला जो हमने रखा था वो पार्टिसिपेंट्स इंट्रोडक्शंस का था। तो इसमें हम लोग ये चाहेंगे कि आप लोग अपने अपने टेबल के गिर्द इंट्रोड्यूस कराओ। कुछ जो है साथी वो तो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते ही होंगे, लेकिन जो पहली पहली बार मिले हैं वो उनको ज़रा ज़्यादा टाइम दें, और अपना इलाका भी, अपनी स्पेशलाइजेशन भी, अपनी इंटरेस्ट भी। तो आपको थोड़ा सा मैं टाइम दूंगी, 10-12 मिनट, ठीक है? सो अपने टेबल के गिर्द आप लोग इंट्रोड्यूस कराइए अपने।
बलूचिस्तान में किसी किस्म का कांटेक्ट चाहिए हो कल्चर का, चाहे म्यूज़िक का हो, चाहे उसके ऊपर स्टडी का हो, तो अब्दुल्ला बलोच साहब इज़ सॉर्ट ऑफ नंबर 1 कांटेक्ट। तो मैं आप लोगों की तरह देख के भी बता रही हूँ, ठीक है। अब्दुल्ला बलोच साहब हैं, असगर बलोच साहब हैं जो कल्चर के हेड हैं इस वक्त। इस तरह के लोगों को आप ज़रा अपने फिंगर टिप्स पे रखिए, बड़ा ज़रूरी होता है। अच्छा जी, थोड़ा सा वापस से टेंशन मैं ले सकती हूँ, मुझे पता है ज़रा जालिमाना काम है ये, लेकिन थोड़ी अटेंशन वापस आ जाए। अब हम ज़रा फॉर्मली इसका शुरुआत करने लगे हैं, ठीक, क्योंकि हमारे बाजे वाले आ गए। बुशरा आपको जी, बुशरा सादिक को मैं इनवाइट करूंगी स्टेज पे। बुशरा जो हैं हमारी बहुत प्यारी सिंगर हैं, पंजाब से, लाहौर से इनका ताल्लुक़ है। और माशाल्लाह हमारा तो जब जब भी कोई सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ है तो इन्होंने बहुत दिल से उसमें गाया है। इनको आज हमने ये कहा कि अगर पंजाब की उससे हम शुरू करें तो हीर जो है वो सबसे ऊपर आती है। तो क्योंकि आफ्टरनून में हम सिंध का म्यूज़िक थोड़ा सुनेंगे तो हम हीर से शुरू करना चाहते हैं, और इस तरह की काविश जो है हीर से शुरू हो तो बहुत अच्छा लगेगा। आइए। अगर उत्थे वो खड़ी हो जाए तो बेहतर नहीं। चल ठीक है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा तर्जमा बता दूं। वैसे हीर का हम मशहूर पीस ही गा रहे हैं, लेकिन पहली जो चीज़ है वो आम तौर पे आर्टिस्टों को शुरू करना है तो हम से करते हैं, और वो बहुत इंटरेस्टिंगली अल्लाह के इश्क को साथ ही दूसरे सारे किस्मों के इश्क से जोड़ देते हैं। ये आर्टिस्ट का कमाल होता है। अच्छा, दूसरा जो पीस है वो हीर रांझा की कहानी से सारे वाकिफ़ हैं। एक एंगेजमेंट, एक कह लो बातचीत होती है सैती की और रांझा की। आपको याद है जब हीर की शादी होके वो चली जाती है और उसकी नंद है सैती, और ये फ़कीर बन के जाता है, और वहाँ से फिर वो उसको लान तान करके फिर वो उसको पता चलता है रांझे का, तो वो भागी जाती है क्योंकि उसने अपनी दिल की मुराद मांगनी होती है। तो ये डायलॉग है रांझे का और उसकी जो नंद है हीर की सैती उसका। और रांझा साहब काफ़ी ज़रा गुस्से में आ गए हुए हैं क्योंकि उनकी बेइज्जती हुई है। तो अब वो ना उसको थोड़ा सा पुश कर रहा है, तो वो कहता है कि तुम तो बहुत मगरूर हो अपनी जवानी की, अपने हुस्न की, बहुत मगरूर हो, तुम्हें किसी अच्छे उस्ताद ने ये चलाकियाँ सिखाई हैं क्योंकि तुम बहुत तेज़ हो। तो उसको थोड़ा पुट डाउन कर रहा है वो गुस्सा खा के, उसकी ज़रा अना मजरू हो गई है। और फिर उसके बाद वो उसको इनडायरेक्टली कह रहा है कि तुम क्या हीर के पीछे पीछे फिरती रहती हो लेले की तरह, वो जो बकरी का बच्चा होता है। मतलब उसको यह है कि थोड़ा सा लीव हर अलोन भाई, और भी लोग हैं, तुम क्या उसकी सहेली बनी रहती हो, उसके पीछे लगी रहती हो। और फिर वो थोड़ी सी अपने लिए स्पेस क्रिएट कर रहा है, और फिर ज़रा सा वो उसको थोड़ा सा सूफ़ी टच भी देता है, और उसको कहता है कि जो रब ने जिन्स जो जोड़ी हो उसको जुदा नहीं करना चाहिए, और जो एक जैसे लोग होते हैं उनको बिछड़ना नहीं चाहिए, और जो बूर होता है ताज़ा उसको कभी हाथों में मसलना नहीं चाहिए। यहाँ पर एंड होता है। मैं हीर सुनाने लगी हूँ। हाँ। अलहम्द खुदा दा विरद करिए, इश्क कीता सो जग दा मूल मियां, हो पहले आप ही रब ने इश्क कीता, ते माशूक है नबी रसूल मियां।
लिए रूप गुमान भरिए भेड़ो करनी करब कहे लिए नी एडे फन फरेब क्यों खेडनी ते किसे वड्डे उस्ताद दिए चेलिए नी तेरी भाभी दी नहीं परवाह सानू वड्डी हीर दी अंग सहेलिए नी मिले सिरां नू कदी ना विछोड़िए नी हथों विछड़े दिलां नू मेलिए नी क्या वैर फकीर नल चाई पिछा छड़ अनोखिए ले लिए नी वारस जिन्स दे नाल हम जिन्स हुंदे भोर ताजे ना कदी भी मले लियनी शुक्रिया शुक्रिया मूड में आ गए सारे बस यही हम चाहते थे, ज़रा फोक टेल्स के मूड में आ जाएं। तो अब हम अपने पहले सेशन का आगाज़ करेंगे। जो पहला सेशन है वो म्यूज़ियम्स के ऊपर होता है, क्योंकि हम समझते हैं कि जो जिस तरह हम टेंजिबल इनटेंजिबल कल्चर में आमतौर पे डिवाइड करते हैं कल्चर को, जो छूने वाली चीज़ें हैं और जो छुए बगैर आपके रिश्ते, आपके गीत, आपकी पोइट्री, दोनों को हम कवर करेंगे। तो म्यूज़ियम से हम इसलिए शुरू कर रहे थे ताकि टेंजिबल कल्चर को ज़रा हम समझें और देखें उसको कैसे इंटरट्वाइन करते हैं इंटेंजिबल के साथ। और डिस्प्ले जो है, म्यूज़ियम एग्जीबिशन जो है, उसको एक स्टोरी सुनानी चाहिए जो उसमें आता है। तो हमारे स्मिथसोनियन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे पार्टनर, उनका नाम आपने सुना, मुझे मालूम नहीं कितने लोग वाकिफ़ हैं या आप में से कोई वाशिंगटन डीसी में जाके उनके म्यूज़ियम देखकर आया है। आंखें ऐसे फट जाती हैं और इंसान कहता है कि और देखें। मेरा ख्याल है 25-30 के करीब तो उनके सिर्फ डीसी के अंदर म्यूज़ियम्स हैं और इतने बड़े हैं कि आप पूरा दिन एक में लगा लो। तो उनको हम लोग ज़रा महागुरु समझते हैं म्यूज़ियम्स के। तो इस वजह से हम कोशिश कर रहे हैं अभी कनेक्शन की। अली, आपके क्या हालात हैं? ठीक है, हम स्काइप पे सेशन करेंगे। पॉल टेलर, उनका, अगर आप में से कोई डीसी में इन म्यूज़ियम्स में गया है? आप गए ना? तो जो उनका नेचुरल हिस्ट्री का म्यूज़ियम है उनके ऊपर इन लोगों के ऑफिसेज़ हैं और इंसान सोचता है नेचुरल हिस्ट्री का म्यूज़ियम, मगर ये हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ये एशिया के स्पेशलिस्ट हैं और बेतहाशा रिसर्च करते हैं। जो लैंग्वेजेस में लोग इंटरेस्टेड हैं उन वो भी नोट करें कि वो बिल्कुल जो लैंग्वेजेस अब गायब होती जा रही हैं उनके ऊपर भी रिसर्च करते हैं, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ पे भी करते हैं और अलग अलग रीजन्स के स्पेशल एग्जीबिशंस करते हैं ये लोग। और सिर्फ नेचुरल हिस्ट्री में नहीं, बाकी जगहों पे भी ये करते हैं।
तो हम पॉल टेलर और उनके साथ रॉबर्ट पॉन्सियान हैं जो उनको असिस्ट भी करते हैं, और वो उनकी अपनी स्पेशलाइजेशन है। पॉल टेलर की ढेर किताबें हैं और उनको भी हम एशिया के ऊपर ख़ास तौर पे गुरु मानते हैं, बिकॉज़ बहुत लिखा है और जीबी पे भी बड़ा काम है। और उनको मैंने स्पेशल मैसेज भेजवाया था कि जीबी के बड़े बड़े कमिटेड लोग यहाँ आए हुए हैं। उन लोगों के यहाँ उन्होंने मुझे बताया कि उनकी जो अपनी आर्काइव्स हैं उसमें जीबी का अच्छा खासा सेक्शन है। तो मैंने कहा था कि कोई अगर बातचीत ऐसी हो जाए कि आप लोगों की चीज़ें उन लोगों की चीज़ें कुछ इकट्ठा उसका एग्ज़िबिशन करके और इंटरनेशनली अगर जाए तो मेरे ख्याल है बहुत मज़ा आएगा। तो बाद में आप लोगों को कोई भी कांटेक्ट करना चाहे जिसका भी रेलेवेंस बने, तो हम इसमें हम श्योर नहीं थे कि हम फ़ोन नंबर्स वगैरह सारी लिस्ट में डालें हर एक का या नहीं। आप लोगों से इजाज़त भी ले लेंगे, अगर आप कहें तो ईमेल कर देंगे, ताकि आप लोग आपस में अपना ईमेल पे या उस तरह कांटेक्ट रखो। और जो ये स्मिथसोनियन के लोग हैं उनसे कई लोगों का मेरे ख्याल बनेगा, सुर बनेगा, तो उनके भी हम आपको कॉन्टैक्ट्स दे देंगे। जी अली, ठीक है, फ़ोन पे। अब ये अली का कमाल है, ये पॉल टेलर हैं और ये जो हैं रॉबर्ट पॉन्सियान हैं, ठीक है। अभी वो ऑडियो भी थ्रू कर देंगे, ये आपको अगला सेशन देंगे जो म्यूज़ियम्स के ऊपर होगा, ठीक है। एवरीबडी इज़ विद मी, ओके। Good morning. Good morning. My name is Paul Michael Taylor. Assalamu alaikum. And I'd like to introduce also. In this short time, we can begin a dialogue that can be continued when I do get to Pakistan, inshallah, and when our guests and friends from Pakistan have the opportunity to visit us here in Washington as well. Our topic today is storytelling in museums and cultural centers. We'll be talking about museums, but many people who do not work in museums actually, I think, can benefit when we see what storytelling museums is about. And that's because the museums, cultural centers, historical sites all rely very much on finding and developing good narratives. I want to begin, though, by expressing my sincere thanks to the IRC in Lahore, particularly Mr. Muhammad Wasim and Dr. Fawzia Saeed, our good friends in Lahore. Also, I very much thank the U.S. Embassy in Islamabad. Mr. Matthew Singers is a cultural affairs officer, all his predecessors over the previous times, and also, of course, Mr. Asra Iqbal, who's been a great help, and all the staff of the embassy. I want to thank the State Department staff here in Washington that's involved with South and Central Asia, particularly Pakistan. And I also want to thank our friends at the Embassy of the Islamic Republic of Pakistan here in Washington. Our talk today is about storytelling in museums and cultural centers. So let's share the screen. And hopefully you can see this screen when I put the PowerPoint on. The PowerPoint has several parts. It's just 4 parts, actually. And we'll divide it up. First, we want to talk about a museum and its mission and the stories that that mission have. And second, the activities of a modern museum and our narrative or narratives. Third, how we tell stories in our research and publications. And fourth, storytelling in exhibitions. In all these, we'll use some examples. And I hope that tomorrow, when we all talk about ideas for the future, we might
find some good examples from Pakistan that we could apply in these ways. So beginning first with a museum's mission and its stories. What is a museum? I have about 7 quick slides on this topic because I think the type of museum and the type of institution we're in helps determine the kinds of stories that are most effective. So we have the International Council on Museums definition. It calls attention to the fact that museums are not profit-making, that they're permanent and not short-term. I mean, of course, permanent institutions don't last forever, but that they have collections, they're open to the public, and so on. I want to emphasize that the skills that our students learn in learning to work in museums or think about museum issues can be applied in many other areas. So, for example, corporations now often develop art collections, which are great investments, but they need the equivalent of museum staff to manage them. So there are lots of job opportunities for people who study how to handle museums properly, even beyond museums. But the museums that we have around the world today are actually the inheritance of a, we can say, Western European tradition deriving from the royal cabinets of curiosity of the Renaissance and afterwards. Now, we all know that peoples throughout the world in Asia, Africa, and the Americas had methods for keeping their valuable objects. But the museum tradition really derives from this and has become international now. This is one example. This is the Danish National Museum in Copenhagen. Yes, am I sharing screen? Can you see the screen? Well, something's wrong there. Sorry. Let's go back. Can you see the screen now? Can you see my screen? Okay, turn to full screen. All right. Sorry, this was supposed to be earlier. These are the 4 parts, and I think you did not see that for technical reasons, but we're starting with a museum's mission and its stories. I have about 7 slides. The definition of a museum, which I meant to show you when I went through it. Can you see this now? Okay. And I was just saying that our museums internationally now derive from a Renaissance tradition of royal cabinets of curiosity. So the Danish National Museum, which is now a modern museum, actually was founded by and developed from the royal cabinets or collections of the royal family in Denmark. These were closed to the public, so that's been a big difference. And our trend now is increasing public visibility. From there, in the 19th century, developed many scientific museums. And here's an example from the Netherlands, in Leiden, the National Museum of Ethnology, now World Cultural Museum. Examples from Southeast Asia. And look at what we're finding. There's a very big mixture of things that are aesthetic, like arts, and things that are not, that are folkloristic. And this is typical of scientific museums. I myself work in a natural history museum. So we have a great liberty to put ugly things on display, even a lump of coal or something, because as long as there's a good story. So what we need is the story. We don't need the great artwork. And that's a big difference from the art museums. And even cultural art from around the world, particularly in the 20th century, developed in a kind of split between ethnographic museums, like this one in Basel, Switzerland, the Museum of Ethnology there. Here's its curator, and he actually carries out these kinds of traditional burning incense before images from Bali and so on. And
that and the style of exhibition also is highly folkloristic, which came in the 20th century to be considered a kind of colonial relic in some ways. So this museum in Amsterdam, the Tropen Museum, started really a 20th century anti-colonial trend, and it's called the decolonization of museums, by involving people from those areas represented in the collections in showing their own cultures the way they wanted to show them. But again, this is not in an art format. It's a different kind of storytelling where people are invited to Europe to tell stories. Again, we're looking at development in Europe. From this, we also had already separately a European art museum tradition, and that came to be applied by people like this, Mr. and Mrs. Jean-Paul Barbier in Geneva, Switzerland, to indigenous arts from around the world. Here they are with some of their collection, modern art paintings alongside African images. So their museum in Geneva is one of the great examples of sort of the cultural arts from indigenous peoples around the world displayed as art objects. Very different from the scientific museum style, with a different kind of storytelling also. Unlike the scientific museum, doesn't rely on a lot of labels to tell a story. The idea is the artworks are supposed to be so aesthetically beautiful that they will have their own form of appeal, and too much story in the form of text gets in the way. That's a design format typical of art museums everywhere. So the type of museum and the style of fundamental design that you choose will have a huge effect on the way you tell your story. We also have the development of course, the independent countries all over the world now developing their own entirely separate museum systems, like this National Museum in Indonesia, which didn't have to worry about the old European classifications anymore and could go in their own direction to develop their own national identity. And that's the trend we see very strongly now all over the world as well. How does this affect all of us who work in museums and have a lot of day-to-day issues that we have to deal with? I'd like to use the example of Indonesia because that's where I started. Believe it or not, that's me. And here we are in the late 1980s. And the Indonesian museum system, with its old-fashioned displays, now much improved, and its old storage underneath the cases. This is exactly what the early Smithsonian display cases looked like. The storage also was underneath the display cases. I use this example with the permission of my friends and colleagues in Indonesia. So their question for me was not really how can we tell stories, how can we do great exhibits, how can we become a great, internationally known museum. Their question was very simple things like, we have big problems here. We have a lot of needs for conservation. We don't have any funding. And things like this, which we know are important historically, but we don't have the information about them anymore. We have to go through our catalogs and our old records to find it. We need conservation. We need improved storage. We need so much. Where do we start? And this is the kind of situation I want to emphasize. If you're in this kind of situation, and frankly, all museums, even the most wealthy ones, have some of this issue. If you're in this situation, finding the right, good story to tell is a very good way to get past it. And here was our suggestion. Nobody wants to fund fixing up one storage cabinet, restoring something and putting it back in storage, even though it does not cost very much. People would rather fund a much larger project, which is an international exhibition, a book, all these things. These are the kinds of things that we could be doing. And that's exactly what we did, trying to combine the different components of what our museum does
into a big project, which included within, you see here, there it is on the left, one of the, by the way, those things, those wooden sculptures, those are the frontispieces or the front elements of boats, of big boats of sultanates from Borneo. So there it is on the left. And on the right, you see that we had two of them completely restored as the entryway into the exhibition. So I was, honored to be the curator of this exhibition. And in the course of funding a large project, we actually found the money to do training for people in Indonesia, also a lot of restoration and so on. So sometimes finding the right story, if particularly a story that convinces people that they should sponsor the kind of assistance needed to make the story visible, then that can accomplish the needs that you're trying to accomplish. I've inserted this slide. If you go to our smithsonianacademia.edu website and my name, you'll see I have about 80 papers and about 23 of our books. Here are just a few that I'll be talking about, and Rob Pension will be talking about. These ones from Sikh's Legacy of the Punjab, Undiscovered Occupied, and this 2017 publication about Turkmenistan, Durdi Bayramo, Life, Art, and Legacy, with the asterisk. Those are co-authored by Dr. Pension and myself. I put this up here, and you'll have a copy of this. I want to mention that all of you are welcome for your museum libraries or university or other libraries to ask for complimentary copies of publications, but you can download digital copies from this website free of charge. I'll show this slide again later when we talk about publications. And so finding the right story reminds us also introducing the fact that we're from the Smithsonian. So I think we will tell something about the Smithsonian as a way of introducing where we come from. If you want to do some of this here. So in 1826, as you can see on the slide here, James Smithson, who was a British scientist, drew his will and named his nephew as the beneficiary of that will. And Smithson stipulated that if his nephew should die without heirs, as he would do in 1835, the estate should go to the United States of America to found at Washington, under the name of the Smithsonian Institution, an establishment for the increase and diffusion of knowledge among men. And after a debate in the US about whether to accept this rather large gift, the diplomat Richard Rush secured Smithson's gift and brought the money in gold bullions to the US in 1838. The total value of the gift, brought in gold sovereigns from England, was over $500,000, which was a great deal of money back then, certainly is still today. There was a debate about what kind of establishment the Smithsonian Institution should be. Should it be a museum or a university, an observatory, a library, perhaps a science institute? And finally, on August 10th in 1846, the Smithsonian Institution is officially created by the US Congress with its mission for the increase and diffusion of knowledge. That was as per Smithson's will. And this was to be interpreted and carried out by its secretary and board of regents. So the first building, which is known as the Smithsonian Castle, and its actual name is the Smithsonian Building, was completed in 1855. And it contained an art gallery, lecture hall, a library, a science museum, different laboratories. And these are reflecting all the different kinds of activities that were foreseen to be undertaken by the Smithsonian at that time. So it was very much a flexible museum space. Spencer Fullerton Baird, who you can see in the photo here, served as assistant secretary and secretary. He worked to establish a national collection at the Smithsonian. By 1878, the US Congress had given responsibility to the Smithsonian Institution for the US National Museum.
Later, a second building was added to house the national collections because they basically the collections quickly became very vast and outgrew the space in the castle. And so the National Museum building, which is now called the Arts and Industries building, opened in 1881. Oh, sorry, may I mention something here? You see near the top left this historic photograph published in historic photograph of a print published in Harper's Weekly. There's a blue whale skeleton, and underneath the tail of that skeleton, you'll see some of the original display cases that were used. They are almost exactly like those display cases, which I showed you, which were used in Indonesia, in the late 1980s. And I may mention that there are not very many of the original ones left here in Washington, but I'm proud to say I actually have one in my own office. So that was a slight interruption. I'm sorry, Rob, go ahead. Yeah, and in the photo on the right there in the foreground, you can see the Arts and Industries building. And just to give a sense of how central the Smithsonian is to Washington and to America more generally, and to America telling its story, really, and its own history, you can see in the background the U.S. Capitol building, as it's just down on the mall, just down the road from the Smithsonian buildings themselves. The National Museum of Natural History, which is the building that Paul and I are in right now, was the third building of the Smithsonian Institution. After the Smithsonian Institution building, also known as the Castle, and the National Museum building were opened. So this museum opened in 1910. And again, as I alluded to earlier, the Smithsonian buildings are very much central to the nation's capital here in Washington, D.C. You can see that we're situated between the U.S. Capitol and the Washington Monument, and not too far away from the White House, several blocks. And you can see that the Castle building on the lower left of the mall is right across from the Natural History Museum, which is the building that we're talking to you today from. Let me summarize what I think you all know, but just so to recall to all of us the activities of a modern museum, because we want to look at how those are integrating into our narratives that we tell people when we tell stories. First, not just museums, but historic sites, many other types of entity, do exhibitions, which has its various components: concept development, design development, project management from beginning to end, audience research, very important for us. We do research before we build the exhibition and also the evaluation afterwards. Second is educational activities, work that we do with schools. Adult programs, of course there are adults in school too, but what we mean is there's a special kind of program, set of programs for different categories of non-school population. Lots of tours and specially developed educational materials. There's an example from the exhibition that we'll be talking about at several points, Sikh's Legacy of the Punjab, where we developed a family guide for kids to walk through the exhibit and see things there. So, multi-page guide. Outreach includes lending to loans, traveling exhibitions. This is one exhibition for which I served as curator about Korean Americans, celebrating the 100th anniversary of the first organized Korean immigration to the United States. That was 2003. Research, we have a lot to say about this because we consider that this should be tied into exhibitions. That's publication of source materials and other kinds of research results. By source materials, we mean things like archival or even museum collections. And that is a very, very rich area for study and research and publication and exhibition in Pakistan, I have to say. The example that you're looking at, which is online now, By Aeroplane to Pygmyland, is about a
a Smithsonian and Dutch government expedition to New Guinea in 1926. When I approached this topic, there was old film footage, silent film footage from that time. There were hundreds of photographs, including many glass plate negatives never printed. And there were lots of old handwritten and typed expedition diaries and notes, plus collections. How do we try to put all of those in perspective? And we created a website as a beginning to actually present this material for the first time. And I wrote a series of interpretive essays about them. And that's an example that we see very applicable to potentially be used in Pakistan in many areas. So we'll talk about that as well. Collections, very important. You may remember from the ICOM definition of museums, it includes in the definition that it must have collections. Many things that call themselves museums don't have collections. They are just galleries where they borrow things and put them on display for a while. Those are not museums in the ICOM definition, but some of the things we have to say are still relevant to those. But collections are very important to what's traditionally called a museum. So that has many elements that have to be kept in mind. Why are we reviewing these different activities? Because when we try to find our narrative, our story that we want to tell, it's great and it's ideal if we can unite these various different types of activities in our same story. So finding our narrative, that's really the key question. Ideally, we want to find a narrative, a story that people want to hear. It will resonate with the public. We want to find a narrative which will also help our mission. We have a dusty, messed up, area of storage with something that is undocumented, needs attention, needs conservation. We need a narrative that's not only interesting to the public, because that is not, but a narrative that will help us with our mission, help us with our research, help us with our fundamental outreach and education efforts. One good thing about a lot of museums, and especially ours, we have lots of data to work with. This is just a few photographs from around our museums. We have all kinds of collections in a natural history museum. In America, unlike Europe, natural history encompasses anthropology. So we don't have a separate National Museum of Ethnology, as they do in most European countries, or Japan. We have a natural history museum that includes anthropology. Now, not just here, but all the cities, Chicago and so on. So we have that kind of data, plus all the natural history data, archives, libraries, film, sound, video, and so on. And they're huge. So let's just look at one measure. This is living species of animals. We're not counting all the fossils because those are very hard to count. They're all broken up, and you can take one and break it up more, and you have lots of them. But individual living species of animals and plants, how many specimens do we have? By our count, we have about 83 million in this building and in our satellite storage facility, where Rob and I are sitting now. Second most in the world is London, then Paris, then Harvard, and so on. From Pakistan, undoubtedly, London has far more than Washington, but we have very important collections we'll show you in a few moments too. So they're huge numbers. So we can't just start at one end of the hallway and go through each animal or plant or object and try to tell a story. We have to find a good story to tell. Let me give you an example of a story that I think is not a good story. It sounded like it would be, and people put a lot of money into it. They wanted to make a sort of public website. This is a web exhibit or web publication about the ecology and animals and plants of Central America. And a long time ago, over 100 years ago,
58 volumes were published on this topic with the Latin title Biologia Centralia Americana. That's biology of Central America, of course. So one idea for a narrative was to take that original old book, digitize it. That's very valuable, by the way, because there's so few copies. So they digitized that. But then they said, let's use this as our structure, and let's add all the new information about the animals and plants, the different examples, the photographs, the new people's publications that they've done, and we'll organize it by expanding the original chapter and subchapter division of this 58-volume work. It was a failure because this old book was simply an outmoded classificatory system. It did not serve well when you tried to put a lot of new material into it and organize it by the old organizational system. So it's hard to explain in detail, but let me just summarize it that way. So the part that was extremely valuable was digitizing and making available this information. But it was the chosen path for the narrative was too vast, and it turned out to be unwise. So it had to be scaled back. Here's a different example of a narrative. We did this exhibition and opened it in 2010, and it's very specific and modest in scope. I mention this because this narrative about Kazakhstan grew out of our museum and historic sites seminar at the Kasteyev Museum in Almaty, Kazakhstan, where we gave examples, including the one about that Dutch and Smithsonian expedition to New Guinea. And we always like to have a kind of roundtable discussion about how the ideas we presented might be applied locally after we have done that. I hope tomorrow we'll have that discussion and people think about ideas like this for Pakistan. Anyway, someone said, well, we've got our old expeditions here, including Valikhanov, who was unknown outside of Kazakhstan, but a very important Kazakh ethnographer and geographer of the 19th century. And so later, when we had the opportunity to apply for some funding with our friends in Kazakhstan, we chose to develop with them a website about Valikhanov. We divided up his expeditions into a set of expeditions, and we built this website with a beginning section on discovering Kazakhstan, simply because a lot of people don't know much about Kazakhstan, introducing the country and Valikhanov, and these other sections, including, you see here on the left, archive. We spent a long time photographing his original drawings. So we went to Serembet, where he was born, take pictures of his place where he grew up. And then we organized a series of illustrated essays, like this one, for the first expedition, the second expedition, and so on. There's also an archive section, which you can see from the tab on the top right, which allows you to go through all the original photographs and drawings that had never been published or had been published in very minimal ways in scarce books in Russian. This was a huge international introduction to a Kazakh hero who was really unknown outside the country. We launched this expedition in April 2010 with these images, and you see a lot of other images along the bottom of this where you can get information about it. The labels show up when you hover your cursor over the image. We launched this when the president of Kazakhstan visited Washington. There's also a bibliography. And huge party, well, this is not what you normally ever do when you launch a simple scientific website, but you know, the president was coming and somebody had to do something.
So we could have just done the party. I suppose it's not that hard to find funds to do a big party in such occasions. But we don't, I mean, it's not like we don't like parties, but it seems like a waste to us to do a party just to have a party. We'd rather have the party that launches something that's really worthwhile and will last. So when we have this opportunity, like the president's coming and we could do a huge way of welcoming him, which we got very fortunately, Chevron Oil Company sponsored this. And they sponsored also the development of the Balikhana website. That's what we like to do. We like to have wonderful events, but we like to have, lasting improvements to our museums and our scientific knowledge in addition to these wonderful events. I think I have to watch carefully the time. So I will go very quickly through the kinds of work that I think can be done with many old archives and collections, and I'm using the 1926 expedition example. We have many types of materials, and this is what we, of course, the kind of work that we were doing in the first year of the project also, with ballads and so on, building and recordings, building databases, better indices. But sometimes we have old archives where we want to scan and digitize the material. This is just equipment here in this office. And we, I think because of the short time, I'll just say that I have a longer seminar, and we do give longer presentations on these issues of the various levels at which we provide this, do the scanning when we do that, and also how we put textual documents into our websites, our publications, and so on. There are many old books and sources of information about Pakistan which simply are very seldom available outside of Pakistan or are relatively unknown internationally. We would love to see more of those published. I have been working on the field notes of William Lewis Abbott, who visited Pakistan many times, and I have recently published a paper about his travels in Kashmir and one paper about Baltistan from his notes and collections. But optical character recognition at this time is not adequate at all to handle material like the handwritten document on the right. The one on the left, we have such poor accuracy with optical character recognition. It's actually faster from our perspective and better to just transcribe it by hand. Triple key is the method for having several people check the same transcription. Statistically, if two people don't have any mistake in the transcription, then we assume that they both transcribed it correctly. If there is a mistake, we go back and check. And these are several other issues. As we can convert phonographic records to digital components, and the science for doing this is changing all the time. I won't say much about this. I will say that at University of California, Berkeley, a method has now been developed, which allows us even to reconstruct the sound of these phonograph records if they've been broken into pieces. Even if it's shattered into many pieces, the individual pieces can still be digitized using a very short, highly intense laser light so that you can reconstruct the sound of an entire phonograph record from its shattered pieces. That was not possible before. We have to stop throwing those away if they're unique. So the science of doing this sort of thing is constantly changing, and the methods of presenting them online are quite varied, which leads us to storytelling in research and publication. I think I'm nearing the end of the time, so I won't say much about the example that I wanted to say more about, but I will just mention that on this 1926 expedition, we have a couple of different journals of people who were on the expedition. We have all the places that they visited. So when you go into this website, you can actually pick what place they visited that you want to find out about. So
collecting expeditions in the past or archaeological records of different parts of an archaeological site. All of these things are capable of being done in this way that allow you several ways to approach the data. You can pick what date the expedition was in any particular place and go find all the information from that date. That is the films, the film footage, the photographs, everybody's notes, including all the different people in Dutch and in English, and so on. So these are different ways of organizing them. And then we also make something that's easy to read from beginning to end with record continuing by date and photographs inserted. We just picked out photographs ourselves and inserted. That's what we're doing also with the publications by William Lewis Abbott, who was in the person I mentioned who traveled really kind of worldwide, but he spent a lot of time in Kashmir and Ladakh and in Baltistan and in Pakistan. That was him, by the way. This is how original collections were recorded when they first came in. Back in the 1930s, typed catalog card records were made from them, and so on. These were his original handwritten notes to his mother. He wrote several notes, interesting notes to his mother and his sister from Pakistan. So volunteers went through and typed those. And that was wonderful volunteers. A whole group of volunteers spent hundreds of hours. Not only his collections, but many other collections from Pakistan we have. Here's Dr. Pansion now with some of our Pakistan collections. These are largely unpublished. So to all our great friends and associates in Pakistan, what we want to say to you is we would love to work together on material like this and to integrate a proper catalog and publication about these collections. But we have in the past had several joint projects between Smithsonian and Pakistan on these collections. It's a tremendous opportunity for the future, we think. These are our current storage cabinets. They're much different from before. This is in a storage facility that we built outside of Washington. Long story about that, but basically entirely temperature and humidity controlled with the most up-to-date storage that has the least amount of damage possible in terms of wooden drawers and so on will over time have some microbial damage. So these are inert materials, and so this is for the long-term preservation of our collections from Pakistan, which are very valuable national collections. We don't have very many antiquities. I don't think we have very few, maybe some gifts of state in the past, but basically it's all ethnographic material and largely unpublished. Tremendous amount I'd love to say about that. Here he is with one example, which got cataloged in two completely different ways here, but anyway, it's one of several things that are problematic. We need to ask a few folks there about this. So I just jumped through very quickly the part about research. We have just the remaining time to talk about exhibits, but I do want to give this site again, si.academia.edu. You'll see towards the bottom of this list the publication Baltistan in 1891 and 1912, the Smithsonian's Baltistan collections. That was just published this year. It was published in Lahore, but it's an internationally known journal. And you'll see also William Lewis Abbott in Ladakh and Kashmir, and that was published last year. So all of these can be downloaded for free. And of course, if you need me to mail you copies, please contact me and I'll be happy to do so. Storytelling and exhibitions, and I'll use this example to say that we have to tell a story that's going to be of interest to people, but remember that when we pick the stories, we want to also find a story which is going to help us solve our institutional problems. If our institutional problem is everything's in poor storage and needs conservation, then let's find a story that does that. If our institutional problem is we don't have enough base funding, we need to increase our visitors and find ways to bring funds in to accomplish our mission better, let's find a story that does that. Let's find the right story that's an interesting story and it's a good exhibit in its own, but in finding that story, we have to find one that meets our other needs. On that example of the Indonesian exhibition, Beyond the Java Sea, this includes now educational materials. Remember, I gave the example of the museum's
many component activities: education, outreach, collections, research, and so on. This is an outreach event. We did a film series about Indonesia, including some archival films that we were able to restore, and other outreach is versions of this exhibition elsewhere. So the library put up an exhibition of old books about Indonesia at the same time. This whole group of activities, we called it Festival of Indonesia. It traveled around the United States. Here's the brochure when it went to San Francisco in the opening. And oh my goodness, that opening, about half the cabinet of Indonesia of the Republic of Indonesia was present in San Francisco for it. It went on to Leiden. This is the translated guide in Leiden. And it went to Australia, 2 cities, Sydney and Brisbane. It did not have a separate brochure or guidebook, but it also went, before going to Australia, it went to Jakarta, the capital of Indonesia, and was on display there. So we find stories from many countries. Here's one that we did an exhibition about this one basket maker and his baskets. We did not have a single object in our collections from this basket maker or about this topic, but the exhibition brought the objects here. We paid for them and we bought them, and we basically put them in our collection. This is a great idea. And you saw those things that are in our collection from Pakistan. They're still being made. People can do things like this. Well, anyway, I mean, I don't want to get started because I have to talk about things we have already done, but I wish we could be all talking about things we should be doing next. Anyway, well, I don't have much time. We did an exhibition of one of the foremost regional photographers from the Philippines, Eduardo Masferrer, and his photography. Lots to say about that. I do want to say that international partnerships are quite important for developing these ideas. And I have only a few minutes left. This was a program in the past. We did it with Saudi Arabia. That's me with a very key researcher there at the National Museum of Saudi Arabia, who is Pakistani himself. And actually, oh, by the way, in the background, I noticed that's my son sitting there. But anyway, he was not part of the grant. He just went with me. I used my own money for that. But yeah, that's when we were working on this project. I will mention that quite a few of the really good researchers in Pakistan are from, good researchers in the museum system and the archaeological field in Pakistan, in Saudi Arabia, are actually from Pakistan. I can see why I get it mixed up from traveling in Saudi Arabia a lot. But the result, anyway, is this. This is on the top left, the Deputy Minister for Museums and Antiquities of Saudi Arabia with our web designer from the Smithsonian and other staff, developing this inscriptions from the National Museum of Saudi Arabia. And we worked to have photography, black and white, and also the line drawings, because you can see different things in them. Anyway, it's a complex matter, and there's a publication which is on my academia site in explaining how we went about doing that international partnership and how it developed. This is our exhibition called Sikh's Legacy of the Punjab. I think this will resonate with many people there, and it's one of many topics that could be done. I have a lot to say about this, but we have only a few minutes left. And what I will mention is the importance of community involvement in developing how you represent people in their cultures. And so we had a lot of we had a lot of research with people in the Sikh community and how they themselves want to see themselves represented and what's important, but also a lot of audience research with the kind of people, random samples of people who come to our museum, who are international and national visitors, to see what they were interested in. And so I have a lot to say about all of these, but these are different depictions of Guru Nanak Dev Ji. This is the Janam Sakhi examples. But we often have problems like this in the artworks of Pakistan. Islamic, Sikh, all artworks
historic artworks of Pakistan. Problems of deterioration, that verdigris, which is used for the green color in a lot of miniature paintings as well as old books, inherently the chemicals are causing the structure of the paper to be damaged. So treating this is quite expensive and time consuming. People don't like to pay for it if it's just going to go back in storage. And sometimes the only way you can find ways to get this done is to have an exhibition that does that. I also want to mention the cultural sensitivities that we have to keep in mind. Here in America, there are quite different approaches. I mean, the public doesn't really understand a lot of things that people elsewhere do understand about their own cultures. So, for example, the sacred book, the Guru Granth Sahib, should not be in the same room where people are walking around with their shoes on and their heads not covered, according to the Sikh tradition. But we have to talk about the sacred book of the Sikhs in an exhibition. So the label there is explaining to people that what's right there, looking like it's like the Guru Granth Sahib, the book, is actually just a prop. That the actual Guru Granth Sahib is not present. Otherwise, it might be considered offensive. And we have this with lots of other parts of the exhibition. For example, the local tradition that you should not be mixing secular music, like, you know, things that you would be singing for harvesting plants and so on, with your sacred music. So we have samples of both, but they are on different sides of the exhibition, so that with targeted speakers, when you hear one kind of music, you don't hear the other kind of music. And in fact, in many languages, that word music simply does not exist as a single word to cover both kinds. So we have to keep these kinds of things in mind, even though for the American public, they wouldn't know the difference, but we have to be cognizant of the local cultural traditions that we're trying to depict as we do tell our stories. Really, there's lots more to say, but the main thing I want to say is thank you. Thank you for the time. I know all of you are very busy, and we appreciate the chance to have been involved with Pakistan. I was so honored and happy to be at the first Diversity Festival. Rob here was at the second Diversity Festival. They're times of tremendous excitement and interest and activity for us. I wish my doctor would have allowed me to go. He didn't right now, but I hope to be back in Pakistan in the near future, inshallah. And we welcome all our friends and guests from Pakistan here. Whenever you have the opportunity to visit Washington, we hope you'll look us up. Thank you so much. कैसा लगा आपको सेशन? अच्छा था। और एक मुझे मज़े की बात जो लगी वो ये कि जितने टेबल्स पे हम अलग अलग बैठा रहे थे उसने सारे जोड़ दिए है ना, कि एक एग्ज़िबिशन जो है उसमें फ़िल्म का कंपोनेंट भी है, उसमें इंटरनेट के साथ भी डील कर रहे हैं, म्यूज़िक भी है उसमें, जो हमारे आईटी वाले हैं यहाँ उनका रोल भी, सब रोल्स मिल गए ना एक अच्छे नैरेटिव के लिए। तो कुछ साथियों को अगर इतना क्लियरली आवाज़ ना समझ आई हो तो ऐसी कुछ पॉइंट्स अगर आप कहें तो मैं ज़रा से समराइज़ कर दूं, वो ज़रा से आसानी हो जाएगी कुछ लोगों को। बेसिकली जैसे मैंने इनका तारुफ तो करा दिया था, मगर मुझे भी इनका सेशन सुन के मज़ा आया। एक होता है जो आप खाना खाते हो और एक होता है जो किचन का हाल होता है ना पकाने में। तो इन्होंने जो बैक रूम या जो बैक स्टेज का सारा सिनेरियो है उस पे फोकस किया, जबकि मैं सोची थी शायद एक दो कोई नैरेटिव्स वो बिल्ड हुए हुए बताएंगे। तो बहुत मज़े की बात है, क्योंकि जो प्रैक्टिशनर होता है ना, जो शेफ़ होता है वो किचन का आपको हालात सारे बताता है।
तो ये उसको किस तरह पुट टुगेदर करते हैं वो वाली बात उन्होंने बताई, और थोड़ी सी स्मिथसोनियन की हिस्ट्री बताई। आप देखो कहाँ वो इंस्टीट्यूशन बिल्ड हुआ, लेकिन उस वक्त के लोगों ने भी चलो ये सोचा कि डिस्प्लेज जो हैं अपने कल्चर के और साइंस के, वो एक अच्छी चीज़ है। तो ये सिविलाइज सोसाइटीज़ में इस तरह होना चाहिए। और अब पाकिस्तान में भी बहुत सारे सूबे जो हैं वो अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी म्यूज़ियम, मुझे मालूम है बलूचिस्तान में तो पूरी एक ये रविश शुरू हुई कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कम्युनिटी बेस्ड म्यूज़ियम्स शुरू हों। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। दूसरा जो मैं 1-2 ही पॉइंट्स उठा रही हूँ, वो ये ब्लेंडिंग जो उसने बताई ना कि आपने आर्काइव्स का मटेरियल आपको बिल्कुल राउडी फॉर्म में मिल गया है, अब उसमें से आपने क्या चीज़ उठानी है, कैसे डिस्प्ले करनी है, पूरा ये कंपोजिशन ही हो गई ना म्यूज़िक, कि कैसे आपने उसको दिखाना है, क्या नैरेटिव बिल्ड करना, उसके साथ एडजॉइनिंग क्या चीज़ें जोड़नी हैं। मुझे याद है जब ये लोग आए थे हमारे यहाँ पिछले साल, तो चलते चलते म्यूज़ियम देखते जो ये सजेशंस देते थे उसका हम जल्दी जल्दी नोट करते थे कि वो कहने लगे अच्छा बच्चे आएंगे तो उनके लिए भी कोई चीज़ होनी चाहिए, कोई ऐसी चीज़ भी होनी चाहिए। हर वक्त होता है डू नॉट टच, डू नॉट टच, कोई टच वाली चीज़ भी होनी चाहिए, उस पर लिखा हो यू कैन टच। तो इतनी छोटी छोटी, अभी जिस तरह इन्होंने इंडोनेशियन म्यूज़ियम का बताया कि उसमें इंसेंस जला के, जैसे हमारी अगरबत्तियाँ होती हैं इंसेंस जला के रखते हैं, तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट तरीका है जब आपके सारे सेंसेस को साथ लेके चलते हैं। और फिल्म जो है उसकी बहुत ज़्यादा बात तो नहीं हुई, लेकिन अक्सर पॉल टेलर ने हम लोगों से भी कहा कि जो फिल्म है वो डिस्प्ले का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा होती है। जैसे इंटरनेट है, आर्काइवल है, सर्चेबल। इन्होंने 1-2 एग्जांपल्स भी दिए कि आप लोग ज़रूर, मैं चाहूँगी कि स्मिथसोनियन की वेबसाइट पे जाके उनके किसी भी एक म्यूज़ियम पे चले जाइएगा, एयर एंड स्पेस म्यूज़ियम पे चले जाइए, इंडिजिनस उनका है, अमेरिकन म्यूज़ियम अभी जो लेटेस्ट उनका आया है वहाँ और उनके डिस्प्लेज आप देखें, अभी तो वो 360 डिग्रीज़ आपको दिखाते हैं। फिर डॉक्यूमेंटेशन की बात है तो जहाँ एकेडेमिया के लोग बैठे हैं, मैं फ़ौरन ये सोच रही थी कि उनका रोल कितना ज़्यादा आता है कि आप कैसे डॉक्यूमेंट करते हैं एक चीज़ को। और ये एक ज़माना था जब स्टीरियोटिपिकल बात ये होती थी कि सिर्फ आर्कियोलॉजी के साथ म्यूज़ियम को जोड़ा जाता था। आजकल तो मॉडर्न साइंसेस के साथ भी म्यूज़ियम को जोड़ा जाता है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसके साथ आप डिस्प्लेस को और एजुकेशन के साथ उनको ना जोड़ें। तो ये मेरे ख्याल है एक ये ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत ज़रूरत है कि हम लोग कम से कम अपनी पब्लिक में या अपने पॉलिसी मेकर्स को ये समझाएं कि इसमें डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी से लेके कितनी रेंज है जो इसको टच करती है। और रिसर्च और आर्काइव्स और म्यूज़िक और इंटरनेट और डिजिटाइजेशन, ये सब के सब मिल जाते हैं एक अच्छा नैरेटिव बनाने के लिए। मेरा ज़ाती तौर पे जो इनके यहाँ म्यूज़ियम्स हैं उसमें फेवरेट मोस्ट, बल्कि सिर्फ इनके म्यूज़ियम्स में नहीं, मैंने दुनिया में जितने 60 मुल्कों से ज़्यादा के तो म्यूज़ियम्स देखे होंगे, जो मेरा फेवरेट मोस्ट एक एग्ज़िबिशन है वो मैं आपसे शेयर करूँ। उसका नाम है ओरिजिन्स ऑफ ह्यूमंस। ये स्मिथसोनियन इन्हीं के म्यूज़ियम में है वो, और वो मुझे इतना पसंद है। अगर आप जाओ उस पर भी आप लोग जा सकते हो गूगल करके, तो एक तरफ गोल सी स्क्रीन है, वहाँ छोटी सी जगह बनी हुई है, वहाँ यंग लोग फिल्में देखते रहते हैं उसके बारे में, ओरिजिन्स ऑफ ह्यूमंस। और एक तरफ पूरी वो जीनियोलॉजी बनी हुई है। होमो सेपियंस तो बहुत बाद की पैदावार है, तो उससे पहले उनके तो मैं नाम नहीं ले सकती, लेकिन बहुत सारे हम जो हुआ करते थे उसकी जीनियोलॉजी है, फिर उसके बाकायदा मॉडल्स बने हुए हैं। तो आप उनकी आंखों में देखते हो और आप सोचते हो कि ये मेरे प्रीडिसेसर्स थे जब होमो सेपियंस नहीं अभी आए थे। और फिर वहाँ बच्चों के लिए उन्हें इस तरह बनाया कि आप बटन दबाओ कि आप कौन सी वाली मखलूक में अपना चेहरा देखना चाहते हो, तो आप उसमें तस्वीर खिंचा सकते हो कि आप कहो कि वो आपको मुनीरा ज़्यादा नाम पता होंगे उनके, है ना आप उसको दबाओ और उसका सारे फीचर्स आपके ऊपर आ जाते हैं और आप अपनी तस्वीर, कलर्ड तस्वीर लेके आप सुविनर लेकर जाओ। तो ये ऐसे छोटा सा एग्जांपल है, लेकिन जो पॉल की बातचीत थी, जिस तरह से उसने मुख्तलिफ फील्ड्स जोड़े हैं, तो आपको भी मज़ा आया। जैसे दुनिया के सारे ममालिक भी उसने जोड़ दिए आपको और बहुत सारे फील्ड्स भी जोड़ दिए। तो बल्तिस्तान का जैसे मैंने कहा कि एबर्ट की कलेक्शंस इसने बताया भी, वहाँ पर आप लोग इनके साथ आगे परसू कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छी कलेक्शंस हैं इनकी और आपकी अपनी कलेक्शन। जी हमने वो कल पे शिफ्ट किया। क्वेश्चन आंसर आज तो नहीं हो सकते ना, कल पे हमने ट्राई करने हैं।
कल हमारा एक सुबह सेशन है दोबारा इन लोगों के साथ, तो मैंने कहा था पॉल से कि हम इन्हें कहेंगे कि जो ख़ास बातें हैं वो जमा कर लें, तो कल हम ट्राई कर रहे हैं कि इंटरैक्टिव हो। हाँ बिल्कुल ठीक है। ये अली हैं, अली आप ज़रा इधर आ जाएं। अली के लिए एक ताली भी बजा देते हैं, बहुत अच्छा इसने सेटअप किया है यहाँ। थैंक यू वेरी मच, दोनों मुल्कों को बड़े करीब ले आया। तो इनको आप दे दीजिएगा क्वेश्चंस, को ख़ास हों पॉल या रॉबर्ट के साथ, तो ये उन्हें फ़ोन पे कम्युनिकेट कर देंगे, ठीक है ना, तो ही कैन एड्रेस दम, विल डू आवर बेस्ट। हाँ, क्योंकि आई थिंक ये कनेक्शंस बहुत। जी जी ज़रूर। नोट नोटेड। बहुत अच्छा सजेशन है, एक्सेलेंट सजेशन है, क्योंकि रेडियो पाकिस्तान ने शुरू किया हुआ है। और मैं ये असफर को भी ज़रा नोट करा दूं, और ये कल के अली आप भी नोट कर लें कि पीटीवी के आर्काइव्स में वो अगर हमें हेल्प आउट करें। और ये जो लोक विरसा के आर्काइव्स कराए थे जिसकी कल हम बात करेंगे, फिनोमिनल, उसमें इतना मज़ेदार प्रोसेस है, कल मैं थोड़ा सा आपको शेयर करूँगी आपके साथ, क्योंकि उसमें सारा कुछ आ जाता है, म्यूज़िक, थिएटर, सब कुछ आ जाता है जो आर्काइव्स में होता है। उसको आप सर्चेबल इंजन्स पर डालें तो सडनली एकदम पूरी दुनिया में वो खुल जाता है। तो आई थिंक यहाँ इतनी समरी ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम म्यूज़ियम्स पे ही थोड़ा सा पाकिस्तान को टच करेंगे। हमने वैसे बहुत से म्यूज़ियम्स के लोगों को बुलाया था, इतने नहीं आ पाए हैं। वो हमने वैसे एज पार्टिसिपेंट बुलाया था ताकि एक म्यूज़ियम्स का भी हमारे यहाँ पूरा एक ग्रुप हो। आर्मी म्यूज़ियम की तरफ से हमारे एक स्पेशल गेस्ट हैं, मैं उन्हें कहूँगी आएँ और थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड भी बताएं, ताकि आपकी जो इंटरेस्ट म्यूज़ियम में कैसे आई, ठीक है, एजुकेशन का बैकग्राउंड, रिसर्च का बैकग्राउंड, और फिर किस तरह वो कल्मिनेट करता है एक हेरिटेज में और प्रेजेंटेशंस थ्रू म्यूज़ियम्स में। हमने जो आर्मी म्यूज़ियम अभी मैंने तो कम से कम ज़्यादा चर्चे लाहौर के सुने थे, लेकिन मुझे पता चला कि GHQ में उनका अपना म्यूज़ियम है और फिर अब दूसरे शहरों में हो रहे हैं। और क्योंकि जो लाहौर म्यूज़ियम है वो सिर्फ आर्मी की हिस्ट्री नहीं है, वो एक पाकिस्तान की हिस्ट्री है, पीपल्स हिस्ट्री का भी पूरा सेक्शन है। तो इस वजह से मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही थी कि भाई उसके पीछे क्या सोच थी, किस तरह से वो नैरेटिव जो है वो बिल्ड किया, क्योंकि एक हम लोगों ने भी मैनेज किया म्यूज़ियम जिसको पाकिस्तान मूवमेंट का म्यूज़ियम कहते हैं, आज़ादी का, उसमें पूरी कहानी चलती है। तो हम थोड़ा सा इनसे सुनना चाहेंगे, थोड़ी स्लाइड्स देखना चाहेंगे, क्योंकि हम चाह रहे थे इस सेशन के साथ एक पाकिस्तानी सेशन भी हो। और मैं बलूचिस्तान के जो लोग हैं, मैं उनको ख़ास तौर पे कहूँगी कि वहाँ पर म्यूज़ियम डेवलपमेंट की अगर कोई बात हो रही है तो ये बड़ा अच्छा टाइम है कनेक्ट करने का। जो कल्चरल डिपार्टमेंट के भी हैं, और यहाँ सेक्रेटरी साहब तो नहीं है, लेकिन दैट वुड हैव बीन नाइस टू, कि अभी से हम कंसीव बिल्कुल नए तरह से करें, जहाँ बच्चे भी जाके इंगेज कर सकें, बीच में क्विज़ भी हो, बीच में फ़िल्में भी हों, और उस तरह का ना हो जैसे स्टीरियोटिपिकल लोग समझते हैं कि ये बूथ रखे होंगे और इतनी इतनी सी पर्चियाँ होंगी डॉक्यूमेंटेशन की जिससे पढ़ा भी नहीं जा रहा होगा, ठीक है। बिल्कुल इट शुड बी वेरी वेरी लाइवली। आप तशरीफ़ लाइए अदनान साहब। ब्रिगेडियर साहब हैं, तो हम वैसे ही ज़रा कह लें डर गए थोड़े से। ठीक है। अदनान सलीम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के जी डॉक्टर साहबा ने मुझे हुक्म दिया कि पहले मैं थोड़ा सा अपना कोई तारुफ और देन हाउ आई स्विच्ड ओवर टू द म्यूज़ियम, तो सिंपली उसमें ये है कि जब मैं आई जॉइंड पाकिस्तान आर्मी, आई नेवर थॉट that one day I'll be standing here in relation with museums. पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन की, नॉर्मल इन्फेंट्री थी, और कुछ पढ़ने लिखने का था पैशन शुरू से, और इंस्ट्रक्शनल साइड पे चला गया आर्मी में इन्फेंट्री के बाद। और इंस्ट्रक्शनल साइड में कुछ I've served about 10 years in Pakistan Military Academy as instructor, कुछ 3 years with Saudi Army weapon instructor,
एंड देन ऑल ऑफ अ सडन व्हेन आई वाज प्रमोटेड टू फुल कर्नल, तो मुझे जीएचक्यू से कॉल आई जनरल साहब की कि जी आपको हमने डायरेक्टर आर्मी म्यूज़ियम पोस्ट की है, और वो पोस्ट इसलिए किया है कि आपने आर्मी म्यूज़ियम बनाना है। तो आई वाज शॉक्ड। तो मैंने उनको कहा कि जी मेरा कोई एक्सपीरियंस म्यूज़ियम का नहीं, आई नेवर सर्वड इन द म्यूज़ियम नॉर आई हैव एनी क्वालिफिकेशन फॉर द म्यूज़ियम। तो उनका वो जनरल साहब का एक जवाब था, बिकॉज आई हैव सर्वड विद ऑलरेडी। तो मुझे कहते हैं यार आई डोंट नीड एनी क्वालिफिकेशन, आई नीड द पैशन एंड विल टू डू विच यू हैव। I said, okay, sir, if you are confident, fine. Then I reported at Rawalpindi GHQ in 2009 when I was full colonel. तो ये जो आर्मी म्यूज़ियम, अभी आपको थोड़ी सी आगे हिस्ट्री बता दूं कि 1961 से ये एक वेयर हाउस में था जिसका जनरल मूसा ने इफ्तिताह किया, एक शेड के अंदर था। फिर 84 में इसकी बिल्डिंग बन गई, लेकिन जब बिल्डिंग भी बन गई तो अनलकीली उसके अंदर वो टिपिकल वेपन्स 303 राइफल्स और वो चीज़ें शोकेसेस में डिस्प्ले कर दी, वो टैंक्स चंद बाहर रख दिए, और वो इसी तरह कोई इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव म्यूज़ियम ना रहा। इन 2009 जनरल कियानी के दौर में दी डायर नीड वाज फेल्ट कि जी बहुत अच्छा कोई इंटरएक्टिव म्यूज़ियम होना चाहिए ऑन मॉडर्न ट्रेंड्स, ताकि हम अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसका जो गैप हमारा इंफॉर्मेशन का है उसको हम किसी तरह पूरा कर सकें, और आर्मी म्यूज़ियम के हवाले से बच्चों को बता सकें कि जी हमारी जो वॉर हेरिटेज है कितनी रिच है। आप सहाबा कराम से शुरू कर दें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू कर दें वॉरफेयर को, और फिर मुगलिया दौर का आ जाए, फिर आप इवन वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2, कहने को तो ये अंग्रेज़ों की जंगें थी, बट मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स इसके अंदर मुसलमान थे जो विक्टोरिया क्रॉस भी जिन्होंने लिया। तो ये फिर उसके बाद पाकिस्तान आर्मी की हिस्ट्री शुरू हो जाती है। तो इस तरह करके ये सारा फिर अल्हम्दुलिल्लाह कि जी मैं ये अक्सर कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे सेलेक्ट किया फॉर दिस जॉब, और एक बहुत बड़ी ऑनर थी कि जी आप एक शहादा के काम को एक्सप्रेस कर रहे हैं, आर्काइव कर रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं, उसको लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो ये जब काम शुरू किया तो एक प्रोजेक्ट के तौर पे किया, बट लेटर ऑन इट केम द पैशन, और उसमें ऐसा इन्वॉल्व हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो म्यूज़ियम स्क्रैच से किया, सिविल वर्क्स किए, उसके थीम सारे बनाए। आई गिव यू सम टच ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन एज वेल कि हमने थीम कैसे बनाए। तो भी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, स्कूल इन फॉरेन डेलीगेशंस, ऑल इंटरनेशनल हाई प्रोफाइल डेलीगेशंस, वो सारे पहले आर्मी म्यूज़ियम को विजिट करते हैं, देन दे कॉल ऑन टू आर्मी चीफ एंड प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, इस तरह वो सिलसिला चल रहा है। तो so with this introduction, this is the museum facade which we have now, and now it's open for the public as well, 7 days a week from 9 a.m. to 4 p.m. और हमारा भी वो एंट्री भी बड़ा easy, it is in just adjacent to GHQ, वो CSD एक स्टोर है उसके अंदर से we have the entry and it is accessible. जी अली भाई next please. So जिस तरह मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि पाकिस्तान आर्मी म्यूज़ियम 1961 में इस्टेब्लिश हुआ, और 5000 आर्टिफैक्ट्स थे। दैन अगेन आफ्टर रेनोवेशन दोबारा ये 2013 के अंदर दोबारा जब मैंने इसको बना दिया, इसको सारा रेस्टोरेशन कर दी और इसको पूरे का पूरा नया म्यूज़ियम बना दिया, तो 2013 में फिर दोबारा इसका कर दिया। नेक्स्ट प्लीज़। अभी ये आपको जस्ट बिकॉज मेन तो मेरा जो कंसंट्रेट मैं करना था वो तो स्टोरी टेलिंग के थीम के ऊपर, जिसका मुझे फौजिया साहबा ने हुक्म किया कि जी आपने इस पे चलना है। तो सो आई एम जस्ट गिविंग यू ग्लिम्पसेस ऑफ द म्यूज़ियम कि ये जस्ट जब एंटर होते हैं म्यूज़ियम के अंदर, तो अभी जिस तरह मैंने आपको बताया कि म्यूज़ियम हमारी जो वॉरफेयर है वो तो जी दैट इज़ 200-300 ईयर्स ओल्ड इवन इन द सब कॉन्टिनेंट। तो लेकिन बट वी टुक द प्रिंसिपल डिसीजन दैट दिस इज पाकिस्तान आर्मी म्यूज़ियम, सो वी स्टार्टेड द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 14 अगस्त 1947 जब पाकिस्तान आर्मी बनी। और इसी मुझे एक छोटी सी वो चीज़ याद आ गई कि इस तरह वो फील्ड मार्शल थे यूके के, अभी जो उनके थे 5-स्टार जनरल, ही विजिटेड द म्यूज़ियम। तो व्हेन आई जस्ट स्टार्टेड दी कि सर वी हैव सेलेक्टेड द स्टार्ट पॉइंट ऑफ अ म्यूज़ियम आफ्टर कॉलोनियलिज्म 14 अगस्त 1947, तो उनको थोड़ा सा ज़रा सख्त अल्फाज लगे। तो उन्होंने कहा ब्रिगेडियर थैंक्स वेरी मच दैट यू यूज वेरी पोलाइट वर्ड्स कॉलोनियलिज्म फॉर मी। I said, sir, I can't change the history, so this is what it is. You have ruled 100 years in the subcontinent, so we are starting after that.
And then we are celebrating Qaid-e-Azam, the founder of Pakistan, with the Pakistan Army. He had a lot of interactions with the Pakistan Army. Then I have a 60 feet long timeline. This is very interesting timeline in which I have the army chiefs, presidents, and the prime ministers, and their month-wise overlapping tenure, that who has served with whom, and what all important orders they have given at national level. So this is very important information. And then for futuristic, we have this LED. Now we are putting all rest, the prime ministers and the presidents and the army chief on this LED. Next, please. This is now the first gallery. You can see, I think you can imagine what it will be on ground. This is the first gallery, which is 1947 Kashmir War. And in this Kashmir War, because when the children are coming, I am interacting with the children. And I normally, because I made the museum, collected the data, so I have read all the details in depth. So मेरा ये होता है कि जब बच्चे आए तो उनके साथ interact करूँ. अभी I never thought कि ये story telling इतना शानदार skill है. मैं तो informal तरीके से interact करता था, but after this workshop, 2-day seminar, इंशाल्लाह ताला मुझे ये बड़ी खुशी होगी कि इसको मैं formalize कर लूँगा, जो मैं बच्चों से बातचीत करता था कि story build कैसे करते थे. कि unluckily जब बच्चे आते हैं तो I just interact with them. उनको कश्मीर war का concept ही नहीं कि जी पाकिस्तान के हमारे जो आबा-ओ-अजदाद थे उतनी कितनी खूबसूरत एक जंग लड़ी, और जो आज कश्मीर हमारे पास पोर्शन है वो सारे का सारा बिकॉज ऑफ ऑल दीज हीरोज़. ये जो डायरामा मैंने बनाया हुआ है कि आपको थोड़ा सा मैं इफ यू डोंट फील बोर, आपको थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ कि जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान आर्मी भी इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट हुई एसेट्स के अंदर. मुहाजिर आ रहे थे और साथ पाकिस्तानी फ़ौज की यूनिट्स भी पूरे इंडिया में फैली हुई थी, वो भी माइग्रेट कर रही थी टुवर्ड्स पाकिस्तान. लकीली जो चंद यूनिट्स पाकिस्तान के इस पोर्शन में थी उनको असाइनमेंट दे दी गई कि जी जो रिफ्यूजीज़ आ रहे हैं आप उनको रिहेबिलिटेट करें, उनको प्रोटेक्शन दें, उनको खाना दें, उनको शेल्टर दें, ये काम करें. लेकिन जो मेजर पोर्शन था पाकिस्तान आर्मी का, दे वर आल्सो माइग्रेटिंग फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ इंडिया टू पाकिस्तान. सो पाकिस्तान आर्मी इस तरह फॉर्म अप नहीं हुई थी, तो इंडियंस ने क्या किया, मोनोपोली उन्होंने आपस में, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियंस की और हिंदूस की, कि उन्होंने जो कश्मीर था अगेंस्ट ऑल रेड क्लिफ अवार्ड और बाकी चीज़ों के, और कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज पाकिस्तान के पास होने चाहिए, दे स्टार्टेड अटैकिंग कश्मीर. और वो पाकिस्तान की इशारा इसलिए कहा जाता है कि तमाम नेचुरल रिसोर्सेज आपको पता है वो कश्मीर के अंदर हैं, उसको उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया. तो कायद-ए-आज़म ने, वो मैसर भी हमारे जो पहले चीफ थे, उनको रिक्वेस्ट की, ऑर्डर दिया कि भाई अपनी फोर्सेस को भेजो, इनको स्टॉप करो, दे आर वायोलेटिंग द एग्रीमेंट. लेकिन ही रिफ्यूज्ड. उन्होंने कहा जी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और मैं कुछ नहीं कर सकता. सो व्हाट हैपेंड कि ये जो लोग थे हमारे वॉलंटियर्स, जिसको कहना चाहिए, ये गिल्गित-बल्तिस्तान के थे, ये कश्मीर के थे, ये लोग KPK के थे, पंजाब के थे, ये वो लोग थे जो ऑलरेडी आर्मी में सर्व कर रहे थे, घरों पे अपनी छुट्टी पे आए हुए थे या माइग्रेशन कर रहे थे विद द पर्सनल वेपन्स. इन्होंने जत्थे बनाए, जत्थे बनाने के बाद अपने को फॉर्मलाइज किया और ये वॉलंटरली दे वेंट फॉरवर्ड. और इन्होंने जाके इनिशियल कश्मीर की जंग इन्होंने लड़ी. ना सिर्फ लड़ी, इंडिया का एडवांस रोका, बल्कि बाद में लेटर ऑन इन्होंने उनको पुश बैक करना शुरू कर दिया इंडियंस को, और बड़ी हद तक उनको पीछे धकेलना शुरू कर दिया. जब आर्मी में इनको ज्वाइन किया, दैट वाज आफ्टर फ्यू मंथ्स जब आर्मी ने ज्वाइन किया इनको. तो उस वक्त फिर जब इंडिया को पता चला कि जी आर्मी भी आ गई है और ये लोग भी हैं, तो देन दे वेंट टू दी उधर चले गए यूनाइटेड नेशंस में कि जी इसको रोकें. और वो भी उनकी चालाकी थी कि जो कश्मीर हम ले चुके हैं ये तो हमारे पास रह जाए. तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो कश्मीर हमारे पास है, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दिस आर फोर फादर्स, जो उन्होंने उस वक्त कुर्बानियाँ दी, जानें दी, और इनको हलाल कश्मीर मिले. उसके बाद इनको निशान हैदर, जैसा कैप्टन सरवर हमारे निशान हैदर 47 के हैं, तो ये बिकॉज ऑफ ऑल. सो वी ऑल सेलिब्रेटिंग दिस गैलरी 47, 48 कश्मीर वॉर. देन अगेन ये ड्रामा हलाल कश्मीर निशान हैदर के हैं, फिर ये दोबारा उसका ड्रामा है. नेक्स्ट अली भाई. अभी 65 वॉर गैलरी भी है, बट आई एम शोइंग यू नाउ दिस 1971 वॉर गैलरी. बिकॉज जब म्यूज़ियम आप बनाते हैं
तो म्यूज़ियम में तो हिस्ट्री को आप ये नहीं हो सकता कि जी अपनी मर्ज़ी की आप शामिल कर लें और जो नई मर्ज़ी की उसको छोड़ दें. सो यू हैव टू इंक्लूड एवरीथिंग. और जब बच्चे मेरे पास आते हैं तो उनको नॉर्मली मैं जो एग्जांपल ये देता हूँ कि जी 765 वॉर, ठीक है जी, वी सेलिब्रेट कश्मीर वॉर, वी सेलिब्रेट 71 वॉर, वी हैव टू सेलिब्रेट, मे बी विद सैडनेस, मे बी विद सॉरो नोट. बच्चों को सिर्फ एग्जांपल ये देते हैं कि म्यूज़ियम का जो मकसद यही है जी, एजुकेशन ऑफ द यूथ, एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन. और एग्जांपल उनको मैं यही देता हूँ कुरान पाक से कि अभी कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने भी आप देखें कि ये स्टोरीज़ हैं, जो वाक़यात हैं, जो किस्से बयान करते हैं, जो अच्छी चीज़ अल्लाह ताला बयान करते हैं कुरान पाक में, भाई इस कौम ने ये अच्छा काम किया, अच्छा काम किया, अच्छा किया, दे वर रिवॉर्डेड, और इनके फुल स्टेप्स आप फॉलो करें. फिर अल्लाह ताला बहुत सारी कौमों का हाल बयान करते हैं जिन्होंने डिसोबे किया, नाफरमानी की, उनके ऊपर अजाब आया. और उसका मकसद भी यही है कि जी प्लीज़ डोंट फॉलो दिस, इसको आपने फॉलो नहीं करना, इनके फुट स्टेप्स पे नहीं चलना. सो द बेसिक एम ऑफ टेलिंग गुड और बैड इज़ वन कि जी आप जो आपकी फ्यूचर जनरेशन है उसको आप सीधा रास्ता दिखा सकें. द सेम इज़ द केस कि किसी कौम की हिस्ट्री या आर्मी की हिस्ट्री कि जी जो अच्छे इवेंट्स हैं हमारे पास, हमने बच्चों को बताना है कि भाई इनको फॉलो करें, इनके फुट स्टेप्स को, इन हीरोज़ को, और पाकिस्तान को और मजबूत से मजबूत बनाएं. लेकिन जब इस तरह की एग्जांपल आती है तो ये बच्चों को बताना है कि भाई आपने ये, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कभी भी खुदा न खास्ता हमारी आगे फ्यूचर में ऐसा टाइम ना आए जो 71 में आया था, ताकि दोबारा खुदा न खास्ता हमारा किसी का नुकसान ना हो. सो वी हैव अवॉइड ऑल द सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशन अंडर विच we lost East Pakistan in 1971. अभी इस गैलरी के अंदर आप देखें कि जिस तरह ये अभी इट इज़ ऑल रिलेटेड टू द स्टोरी टेलिंग, बिकॉज गैलरी देखने से व्हेन आई विल एक्सप्लेन देन यू विल अप्रिशिएट कि आपको यू विल नॉट गेट एनी इम्पैक्ट व्हाट इज़ बीइंग प्रेजेंटेड, बट व्हेन आई विल एक्सप्लेन टू यू एज अ स्टोरी कि ये क्या किया गया है, देन आपको इसके डेप्थ मिलेगी कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू, वो नैरेटिव क्या डेवलप किया हमने, जिसको बच्चों को बताना है कि भाई हुआ क्या था. अभी यू जस्ट कंसंट्रेट हेयर कि ये पिलर्स इसमें बनाए गए हैं, स्मॉल पिलर्स, आपने कंसंट्रेट करना है ताकि लोग इसके इर्द गिर्द घूमें. उसके बाद आप देखें ये ग्रे बैकग्राउंड और रेड टच दिया गया है कहीं कहीं. ये 3 एलिमेंट प्लीज़ कीप इन माइंड, ताकि मैं जो नेक्स्ट स्लाइड आपको एक्सप्लेन करूंगा तो देन एक्सप्लेन द स्टोरी कि हमने इसको कलर्स के साथ और थीम के साथ कैसे प्ले किया है. जी नेक्स्ट प्लीज़. Yes, now this is the start of the gallery. Pillars अब इसमें नहीं आ रहे. I am intentionally concentrating on this. अभी इसके अंदर देखें the grey background that depicts the sorrow, grief that we lost portion of Pakistan in 1971. This red lining that depicts the blood of the people, civil population, armed forces, shohada, all types, those who sacrificed, those who fought till the last drop of the blood and the last bullet. There is no doubt in the bravery of and the courage of the civil population and the army, those who fought for Pakistan, for their homeland. So this red color is denoting and paying the homage to the people, those who sacrificed their life. Then you see the map of the entire this subcontinent, Pakistan, East Pakistan, and in between it's all India. And then even this East Pakistan is surrounded by India. 71 में अभी क्या था, number one problem which we tell to the people that this is a geographical problem. India ने तमाम साइडों से they interfered in East Pakistan और मुक्ति बानीस को और उनको सारा करके अपने साथ मिलाया against Pakistan army. And then जब ये क्राइसिस शुरू हो गए तो there was no air connection and route connection from both the portions of Pakistan because it is all in between India. The only route available that is through this sea. And at that time, I think they used to take 1 month. So any ammunition, the weapons which they had, that was there because there was no supply later on from this portion to that portion at that time.
So this was the geographical problem. Number two problem was the interference of Indian dominance in the all surrounding area. And number three, the major problem was the leadership crisis at all levels, I would use. At all levels, at our end. So that was our bad luck. So due to all these factors, leadership crisis, geographical problem, then the Indian interference, it was no win situation for any best of the best army. And then later on, there was a lot of propaganda against Pakistan about the people, prisoners of war, and the other atrocities which were being carried out in the East Pakistan. For that purpose now, this text has been placed. This is Dead Reckoning book, written by Indian author Shamila Bose. Even she expressed with the figures which have been displayed on ground, because you cannot hide the army. All those formations, they're deployed there, so that is open to the world. They were not more than 30 to 35,000 people. So still the figure which is being used, 90,000, that is all again propaganda. Then the atrocities being, that this was done by the Pakistan army, they were done, that is all propaganda. Maybe something is done. You can't say that nothing was there, it is there. Wherever the army is there, Indian army is there, any army of the world is there, even in Afghanistan and the other, you will find the stories like this, because all types of people, all types of cultures, they are there. So this is, now just see, this is the story which we develop. And then the pillars I told you, please concentrate on that pillar. Pillars have been made symbolically, because there's a lot of propaganda on the internet, YouTube, and all other, mediums whatsoever. So we want the youth, the visitors, they should explore. As we explore the things, move around the pillars, they should explore the facts themselves. That what was the geographical problem, what was the international problem, and what was the leadership crisis. They should explore themselves, and they should find the situation themselves, that what was the situation at that time and how we lost this one portion of Pakistan. So this is how we have developed this gallery. And again, for the youth, that, God forbids, this should not happen again. And at the same time, then we have displayed the heroes as well, because they were Nishane-e-Haider in 71 war, those who fought with bravery and they saved the land. And even I have one display in my museum. Indian commander wrote the letter to Colonel Sultan. He was commanding 31 Bluch Regiment, that you surrender. Your government has pitched you, and otherwise I am going to attack in the evening. Colonel Sultan gave the answer then and there to the messenger. He put the answer in a bullet and sent it to the Indian commander, and he wrote in that letter is there original with me, that you have mastery over the pen, so forget about this writing. I want to see you stain in your hand next time, so please come over. Then he attacked Colonel Sultan's position, and attack was miserably failed, and there was about 5 Stare Jurats in that 31 Bluch Regiment, and Colonel Sultan survived, and later on he was brigadier in the Pakistan army, and then he was, So this is like this, these stories are there in this gallery. Next, please. Next important thing, then we have the Nishane-e-Haider gallery as well, and the other gallery, but I am just concentrating with the point of storytelling. Now this is very important gallery which I have made, and I am updating this gallery continuously with the changing situation, and so far I have changed this gallery 3 times, War and Terror gallery. Because Raddul Fasad, the latest operation now, this intelligence-based operation, this again I have added in Ramzan, 7 July, after, the current leadership. Now this gallery, just see the theme which we have developed. I'll just explain you the sketch here, because this is the entrance of the gallery. And the moment you enter, here I have the flowers, dove hanging from the ceiling, which gives the message of peace. That Pakistani, they are peaceful nation. They are very lovely nation.
They don't like all this, warfare and all these disasters and other things and adventures. Here we have all, the green colors and people, they are involved in their routine life. All the cultures of Pakistan we have displayed. Even the achievements of Pakistan in the sports, in industry, it was going very well. It was progressing like anything. All of a sudden, this 9/11 incidents happens that is depicted here. And after 9/11, the entire Pakistan is engulfed in the terrorist attacks and all that. And then, this all mode changes from green color, bright colors to the dark color, black and red. And all these happy faces are turned into tragic faces because of the loss of their nears and dears. And then we have the operations. Here we have placed, dark patches there. And on the both sides we have placed the mirrors. I'll show you. In mirrors, you see your own image. Infinite images. So the theme was that you are watching your infinite images, uncountable. So you are unaware that from your own images who is your enemy and who is your friend. This is the most difficult war of the world, where you don't recognize your enemy. Because if you fight with India, you fight with another country, you have the border, you have the recognized enemy, against whom you are attacking. But in this war on terror, you are unaware about your enemy. He's from your own image. You are fighting with your own people. So the most difficult war of the world. Then we have this central portion, this one, where the impact of war on terror. Then you move on to the next, the achievements. Then the Shohada, your APS Shohada, the other army, police, FC, all the people are there. Then I have the sculptures as well from all the nation here. They are united and paying homage to the people. And finally, you come here, this portion. This is again white, where the rehabilitation process, after a lot of sacrifices, it carried out. Roads have been built, schools, hospitals. We are trying to give them the life, normal life back to the people in Wana, Waziristan and all other areas. One important thing in the entire gallery, that the passage is zigzag because there is no direction of war. Another important thing in this theme, that the exit of the gallery is hidden, because we have the entrance but no exit is there. This is hidden. We have this small exit here. So why the exit is hidden? Because still we are unaware that when we'll get rid of this evil. Still we don't know that when we'll get rid of this war. So this is the reason that the exit is hidden. But whenever the exit will be, here I have beautiful pictures of the children. And then again you come in this Happy Pakistan portion. So our theme is that whenever the exit will be from this war, inshallah, which will be very soon, it will be in Happy Pakistan. So this is the theme of the gallery and the story which we have developed, narrative which we have developed. And now I'll show you the pictures of the same gallery. Yes. Now this is the dove area which I was explaining you. These are the mirrors portion where you see your own images. Next. This is again, the Happy Pakistan green color, all the cultures. This is war. This is the 9/11 incidents. And down, just see the barbed wire, conical features, operations, negotiation process with the terrorist, APS attack, killing of the innocent children. Next, please. Then, this is all impact of war on terror on different angles of the society. And, this war on terror is affected from Pakistan, its industry, economy, our culture has been spoiled, society has been spoiled. Political impact is there, social impact is there, psychological impact is there, even religious impact is there, which we have worked out and derived and written over there. And then in the center, we have the Quranic verses for the foreigners. We want to tell them that all these terrorists, those who are using the name of Islam, in fact, they don't have any religion, because no religion on God's earth encourages this bloodshed and killing of innocent people. So in Quran, the killing of one person is the killing of entire humanity.
So we'll tell them that Islam is against all this terrorism that is not being supported, and alhamdulillah now it is evident to the entire world. So the name of Islam is not associated now with terrorism as it was done initially. This is what the sculptures I was telling you now. This is the national dress in Pakistani. Then all people, they're representing their provinces. Even the Sikh and the Christian minority, they are all united. Entire nation is behind in relief work, and they are united, they are together, and they are paying homage to the people, those who have sacrificed there today for the future of the next generation. Next, please. Now, this is the rehabilitation process. And rehabilitation process, we are, I forgot to tell you one thing, engaged in another thing. Our soldiers are shaheed, but those who are ghazis, they are not normal. They have lost their both the arms, both the legs, even 4 limbs, 1 limb. There are many uncountable soldiers. They are disabled because of this, all this. So we have to keep them in the mainstream. We have to keep them involved. Now this soldier is running with Pakistani flag. He does not have both the legs. These are artificial legs. So this is another challenge for Pakistan Army to support all these soldiers, those who have lost their limbs. They are seriously injured, their families, and their other problems, social problems. And this is the portion where the rehabilitation process has been carried out. And this is how we have developed the story of this, gallery, war and terror. And it is worth watching, because I tell you, even from Pakistan, we are unlucky. We don't get time to visit. The previous American ambassador, Dales, when he just came into Pakistan, and on second day of arrival, he was in my museum. I just asked, as a courtesy, sir, how much time do you have for the visit? He said, Brigadier, if I am with you on my second day of arrival, you should not ask the time. I have been advised to first visit the museum and then call on to Army Chief and the Prime Minister. And the next nominated ambassador, who is already in Pakistan, he has also visited the museum. And he has seen this war and terror gallery, because they want to see what is our thinking, what we are thinking, what is our mindset. So they are very intelligent people. So any delegation from coming USA or this UK or the other, they have been told by their own people in embassies that visit Army Museum, and especially the War and Terror Gallery, where we have our narrative, because they want to see from their own angle. This is our angle which I am explaining to you. Next, please. Okay. अभी जिस wrap up का, I'll just quickly जिस तरह ये सारी चीज़ें मैंने आपको स्टोरी टेलिंग और आर्मी म्यूजियम का जैसा बताया कि अभी if I conclude all this, and this is for my own education as well, that storytelling can be used as a method to teach ethics, values, and cultural norms and differences. This is very important, because otherwise you teach the differences to the young generation, it's very difficult to teach. But through this storytelling, it is very easy. Next, stories function as a tool to pass on the knowledge in a social context. This is very important, and this is life-lasting. Anything which you learn through this, you will not forget even your lifetime. So this is again, yes, simple diagram. Yes, next. Please, you can see, I will not explain to just save the time. What all benefits of this storytelling. Then what are the principles? Naturally, because all this skill, it is normally in the army, we use the word man behind the gun. So behind the storytelling, it is the storyteller. So storyteller has to be, very good in presentation skills, eye contact, enthusiasm, good preparation, good voice quality, good speed, and all these qualities are must for the training of the storyteller. Yes. So thank you very much for this patience hearing. And towards the end of, I'll request, Dr. Fozia Sahaba, I was just, when I was sitting here and I was listening her, I think we should have some movement, some awareness
कि when we were children, we used to hear the stories from our grandmother, grandfather, parents. शेख अब्दुल कादिर जिलानी का किस्सा सुनते थे कि भाई झूठ नहीं बोलना, पैसे बांध दिए हैं, कोई पूछे बता दो। डाकू पूछ रहे हैं भी पैसे हैं, ढूंढ रहे हैं नहीं मिल रहे, वो कहते हैं यार ये बंधे हुए हैं भाई, ये सिए हुए पैसे, माँ ने कहा था झूठ नहीं बोलना। सो उस वक्त जो स्टोरीज माएँ हमें बताती थी, हर स्टोरी के पीछे कोई लेसन था। कोई सहाबा कराम की स्टोरीज बताते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा इफ़ाए वादा का बताते थे। ये स्टोरी सुनते सुनते हम सो जाते थे, और मकसद ये होता था कि बच्चों के ऑब्जेक्टिव्स हाई हों, उनका ज़हन जो बिल्ड करें, उनका ऊंचा सोचे। अगर शहजादों की स्टोरी भी सुनाती थी तो वो भी एक फैब्रिकेटेड, लेकिन एम वही होता था कि बच्चों की सोच ऊंची हो, ऑब्जेक्टिव्स ऊंचे हों। तो अभी अनलकीली हमने बच्चों को टॉम एंड जेरी बना दिया, बाकी बना दिया। तो मेरा यही था इनसे रिक्वेस्ट कि कोई अवेयरनेस ऐसी हो कि हम रिवाइव करें, पेरेंट्स को एजुकेट करें कि बच्चों को हम स्टोरीज़ दोबारा सुनानी शुरू करें उनको, कि हमारे बच्चे शाह वलीउल्लाह बने, सर सैयद अहमद ख़ान बने, अल्लामा इकबाल बने, कायद-ए-आज़म बने, ये पर्सनैलिटीज़ दोबारा आनी शुरू और वो इम्पैक्ट वही 4 साल के बच्चे का ही बनता है। तो दिस इज़ द लास्ट रिक्वेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दिस पेशेंस हियरिंग। थैंक यू वेरी मच। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बीच में इंग्लिश में भी था, तो मैं थोड़ा सा एक दो चीज़ें समराइज़ करूँगी, और मैं ये भी बताऊँगी कि मेरा इंटरेस्ट कैसे इसमें डेवलप हुआ था। एक्चुअली लाहौर का एक म्यूज़ियम बना है जिसको मेरा ख्याल है उसका नाम आर्मी म्यूज़ियम ही कहते हैं, आर्मी म्यूज़ियम है, इनकी बहुत सी ब्रांचेज़ हैं। तो वहाँ पर एक जो स्कल्पचर बनाते हैं, मुझे मालूम नहीं आप में से कितने लोग जानते हैं उनको, आफ्ताब चंगेज़ी। तो लोक विरसा के म्यूज़ियम्स के भी और बहुत सारे म्यूज़ियम्स के उन्होंने, मेरा ख्याल है इस वक्त बेस्ट हैं वो म्यूज़ियम डायरामाज और उसके स्कल्पचर्स बनाने में। तो उनसे हम लोगों की भी दोस्ती है, तो वो बहुत तारीफ़ें कर रहे थे कि आप देखिए नया जाके बना है। और फिर जब अदनान साहब से मुलाकात हुई तो पता चला कि GHQ के भी अपने म्यूज़ियम्स हैं, जिसका मुझे नहीं मालूम था। तो हमने सोचा थोड़ा सा वो पर्सपेक्टिव हम लें कि ये स्टोरी टेलिंग कैसे करता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंटेशन। और जो लाहौर वाले उनसे मैं पूछूंगी, आप में से कोई गया है आर्मी म्यूज़ियम? कैसा आपको लगा? हाँ, तो दैट इज़ व्हाट एक्चुअली गॉट मी इनटू दिस होल फिनोमेना के कितना ब्रांचेस हैं वहाँ पर। मेरे ख्याल है पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री के डिफरेंट फेजेस वहाँ पर बताए गए हैं आर्मी म्यूज़ियम में। वहाँ से शुरू किया, ओके। सो जो है ना प्रेजेंटेशंस और नए आजकल की जो टेक्नोलॉजी है, मेरे ख्याल है वहाँ दैट इज़ वाई आई वांटेड टू यूज़ दैट एज एन एग्जांपल आल्सो, कि बहुत नई तरह से कंसीव किया। और चंगेज़ी साहब क्योंकि तारीफ़ें कर रहे थे, फिर अदनान साहब से हमारी मुलाकात हुई, इन्होंने कहा कि हाँ बहुत नई चीज़ें यूज़ की हैं। तो दैट इज़, अगर जो लाहौर वाले वो तो ज़रूरी जाके देखें, और बाकी लोग जो भी लाहौर से गुज़रे वो भी जाके देखें, क्योंकि हमारे हड़प्पा के और टेक्सला के और ये म्यूज़ियम्स तो मेरे ख्याल हम सब के बहुत देखे हुए हैं, और बहुत लोग बार बार जाते रहते हैं अपने मेहमानों को लेके। मगर जो नए म्यूज़ियम्स हैं, मैं ज़रा उनकी तरफ थोड़ी तवज्जो दिलाना चाह रही थी कि वी शुड गो सी। एंड अच्छा, अब एक छोटा सा, अगले सेशन से पहले हम एक छोटा सा एक डाइवर्जन करेंगे। हम GB की एक छोटी सी फिल्म दिखाना चाहते हैं, और आसिम टिवाना साहब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कल्चर, टूरिज़म और एजुकेशन, ये सही है, म्यूज़ियम्स आर्कियोलॉजी मैं सोची थी इन्फॉर्मेशन नहीं है, दूसरी क्या चीज़ है, कल्चर, टूरिज़म, म्यूज़ियम, आर्कियोलॉजी, तो बहुत कुछ इनके अंडर है। वो छोटी सी एक फ़िल्म दिखाना चाह रहे हैं GB के ऊपर, और GB से हमारा डेलीगेशन बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। तो आगे जिसको रिसर्च के लिए कनेक्शन चाहिए हो, कोई एकेडेमिया में चाहिए हो, या कोई कलरफुल फिल्म्स के लिए चाहिए हो, तो ये लोग बहुत खुले दिल से, कह ले बाजू दरवाज़े खोल के इस्तकबाल करेंगे। तो दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू कनेक्ट हियर। मैं चाहूँगी कि अगर आप आके थोड़ा सा इंट्रो दे दें फिल्म का, और फिर कोई सवाल हो ख़ास तौर पे, कोई ट्रैवल के बारे में, कोई उन चीज़ों के बारे में, ये हम बहुत क्विकली 10 मिनट्स का एक हम करेंगे, क्योंकि ऐसा महसूस हुआ बातचीत में कि ज़्यादा लोग GB से इतने वाकिफ़ नहीं। बाकी सूबों की प्रमोशन होती रही है, GB की प्रमोशन ज़रा लेट शुरू हुई है। आप तशरीफ़ लाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग।
So nice, Dr. Fozia. Can you just hold on here for a while? What a beautiful audience it is, starting from our friend. उर्दू में बात कर ले हम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बहुत अच्छा लग रहा है डॉक्टर फौजिया के साथ आज यहाँ पे इकट्ठे होना. और ये जो बंच ऑफ फ्लावर्स देख रहे हैं जिसमें म्यूजियम्स, आर्कियोलॉजी, आर्ट, लिटरेचर, कल्चर, फिल्म, फेस्टिवल, प्रोविंसेस, पब्लिक सेक्टर, देन आर्टिस्ट, वो सब इकट्ठे हैं, बात कर रहे हैं कल्चर पे, म्यूजियम पे, showing that the whole nation is at one page in terms of strength, solidarity, and caring for our traditions and culture. So hats off to Dr. Fozia and our friends. Especially IRC. Moving forward to a little clip that we have just from Gilgit-Baltistan, लेकिन उससे पहले हल्की सी बात मैं कर दूं आपसे. In the capacity of provincial secretary of 5 departments, mainly having this tourism portfolio with me, culture, museums, archaeology and sports. आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक गिलगित बल्तिस्तान नहीं देखा? तो उसी जम्मे ही नहीं. Right? The Sikh is the law. नहीं देखा जम्मे ही नहीं. Right? So it's so beautiful. ये mesmerizing north है पाकिस्तान का और center of gravity है दुनिया की attraction का. I think कल रात मुझसे कोई पूछ रहा था डॉक्टर फौजिया कि how many people we had. अभी डॉक्टर मुझसे रफीक साहब पूछ रहे थे कि कितने लोग आए इस दफ़ा. तो मैंने टोल्ड कि जी हमारी आबादी छोटा सा सूबा है. मुझे 1 साल हो गया वहाँ पोस्टिंग किए हुए. जब जाते हैं तो डर के जाते हैं और फिर आने को दिल नहीं करता वहाँ से. 15 लाख की आबादी, 15 लाख टूरिस्ट. Why? क्यों? We have a lot to offer. हमारे पास अभी तक म्यूजियम नहीं है. फॉर एग्जाम्पल हम काम कर रहे हैं लेकिन पूरा GB एक म्यूजियम है. हर वैली एक म्यूजियम है, हर टर्न एक म्यूजियम है. सर ने अभी हिस्ट्रीज की बात की, बगेट साहब मुगेड़दान ने. ये यागिस्तान का इलाका, हुंजा की वैली, नगर का इलाका, बल्तिस्तान, गिलगित, ये डिफरेंट टाइम्स पे नवंबर एंड 1947 onwards and then till 1952 आस्ता gradually खुद से फाइट करके they became part of Pakistan and Pakistan made it a consolidated northern area and then Gilgit-Baltistan. 10 ज़िले हैं, हर ज़िले की अपनी खूबसूरती है, हर वैली का अपना खाना है और हर खाने की अपनी खुशबू है, हर खाने का अपना टेस्ट है. बैकग्राउंड क्या है? जो सेंट्रल एशियन रेस आई है वो सेंट्रल एशियन खाना है, उसमें आपको मंतूज मिलेंगे. जो रेस आई है फॉर एग्जांपल वो उसे कहते हैं जी लिटिल तिब्बत, ये जो बल्तिस्तान का इलाका है. यू लुक एट द फेसेस, यू लुक एट द लैंग्वेज. बल्ती लैंग्वेज, अच्छा आप सुबह किसी बल्ती के पास नाश्ते पे जाएं आपको कम से कम 30 डिशेस मिलेंगी. 30. कम टू दिस द्यामर साइड, वेरी ब्रेव पीपल, वेरी हार्ड वर्किंग. कम टू अस्तोर साइड, योर देवसाई प्लेन्स, देवमालाई किस्से हैं, खूबसूरत कहानियाँ हैं. बिलीव यू मी, इट्स मेस्मराइजिंग. सो आप लोगों में से जो गिलगित बल्तिस्तान नहीं गया या अभी जाने का प्लान नहीं गया, उसने कम से कम वीडियो देखे, किताबें पढ़े, इंटरनेट पे कनेक्ट करे. अब मैं आपके और उस छोटी सी वीडियो के दरमियान हायल नहीं होना चाहूँगा. अगेन हेड्स ऑफ टू फौजिया. थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू. गुड लक एंड वेलकम टू गिलगित बल्तिस्तान फॉर रिसर्च, फॉर ट्रैवल, टूरिज्म, फॉर एनी काइंड ऑफ इंटरेक्शन दैट यू पीपल वांट. गुड लक जी. नोट कर लीजिए, बहुत अच्छी ऑफर्स हैं जी. क्लिप दिखाई. मिलेगा ना कहीं पे, देखना हो जन्नत को ज़मीं पे. आ जाओ देखो यहाँ कुदरत के करिश्मे. एक बात जो आए दिल यहाँ रह जाए.
ये क्लिप तो ख़त्म हुआ, इस पे तो तालियां होनी चाहिए। 2 मिनट की बातचीत और 2 मिनट का विजुअल, ये अच्छा नैरेटिव स्टोरी टेलिंग हुई ना, है ना? गुड। तो मेरा ख्याल है वो जो हमने बात की कि हर स्टोरी जो है वो कई डायमेंशनल होनी चाहिए, तो मेरा ख्याल है इसके साथ डांस बड़ा ज़रूरी है। 2 मिनट का डांस भी होना चाहिए। हाँ हाँ, अच्छा जी, ठीक है, हो सकता है। लो जी, म्यूज़िक लगा दो। अली, बड़ी डिमांड है। वो शान आपको बता रहा है। आइए ना आप लोग, आइए जी, अब ऐसे नहीं छूटेंगे। हाँ, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ आवर फ्रेंड्स, ये जो खूबसूरत कैप हमारे इन दोस्तों ने पहनी है जो गिलगित बल्तिस्तान से भी स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं हमारे साथ हल्का फुल्का अपने कल्चरल डांस शेयर करने के लिए, इस कैप का नाम ही शांति कैप है। शांति स्टैंड्स फॉर पीस। पाकिस्तान का नाम क्या है? द लैंड ऑफ पीस। सो वी स्टार्ट विद पीस फ्रॉम द नॉर्थ सियाचिन, दो आखिरी तहसील है डिस्ट्रिक्ट घांचे की खपलू, और आज हम कहाँ बैठे हैं? एंडिंग ऑफ पाकिस्तान, बिल्कुल सी तक। तो स्टार्टिंग फ्रॉम पीस टू द पीस। लो जी, अब अली और शान की परफॉर्मेंस हमने देखनी है। सलमान पारिस, अगर उसके पास टोपी नहीं भी है तो वो आ जाए। मैं अपनी नहीं ना लाई साथ, मुझे ये अफसोस है। अच्छा सलमान, नहीं तो आप आके थोड़ा सा सुना दो तो साथ ये गा दो। चल गया, आजा आजा। हाँ, मैं उसे यही कह रही हूँ कि सलमान आओ ज़रा। जी बिल्कुल, सलमान जो है ना वो अभी गवर्नमेंट भी रिप्रेजेंट करे। क्यों जी, आपके डिपार्टमेंट में है। ये सब उसको आर्टिस्ट के तौर पे जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आ जाओ भाई। हाँ हाँ, चलो जी आ जाओ। और हमीद भी बहुत ज़बरदस्त डांसर है। हाँ, मैंने कहा टोपी नहीं भी है तो खैर। सलमान, चलो इनके लिए वैसे ताली बजा दो जब तक म्यूजिक आता है। पछतो
शायान वतन दिले जिंदा का ईमान वतन ए जान वतन जानान वतन ए गिलगित बल्तिस्तान वतन सही गाना सच्ची सब मैं क्यों न तुम्ही से प्यार करूं इस मट्टी को गुलजार करूं मैं क्यों न तुम्ही से प्यार करूं इस मट्टी को गुलजार करूं की पहचान वतन ए जान वतन जानान वतन ए गिलगित बल्तिस्तान वतन गुल रंग लहू के फूलों से है इश्क वफा के उसूलों से गुल रंग लहू के फूलों से रंगीन तेरा गुलदान वतन जान वतन जान वतन ए गिलगित बल्तिस्तान वतन आप लोग क्लैपिंग करेंगे सारे ताज की सूरत सर पर हो तुम इस माथे का झूमर हो तुम ताज की सूरत सर पर हो तुम इस माथे का झूमर हो तुम पाकिस्तान का मान वतन ए जान वतन जानान वतन ए गिलगित बल्तिस्तान वतन ए गिलगित बल्तिस्तान वतन हो लाई ला लाई लाई लर ला ला लाई 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 ला लाई लाई लर ला ला लाई 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 ला लाई 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 ला लाई थैंक यू वेरी मच थैंक यू वाह जी वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अब ये स्टोरी तो किसी को भूलने वाली नहीं है ना? थैंक यू, दिस वाज वंडरफुल, दैट्स द स्पिरिट। और सब जगह के जो है ना ऑफिशियल्स, वो इतने जोश में हो, उनका काम कहाँ से कहाँ जाए, है ना? क्योंकि दिल से होता है ना ये सब कुछ। दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, अब हमारा जो अगला सेशन है वो आपको मालूम है अपने प्रोग्राम में मदर लैंग्वेजेस से रिलेटेड है कि स्टोरी टेलिंग जो है वो मदर लैंग्वेज में क्यों ज़रूरी होती है या उसका क्या एक रिश्ता बनता है जब वो अपनी मदर लैंग्वेज में आती है। जो स्पीकर्स हैं उनको हम ज़रा ठहर के, अभी आपके पास तो खाने से पहले लिखा है, उनको हम खाने के बाद लेकर आएंगे, लेकिन हम एक म्यूज़िकल परफॉर्मेंस आपके लिए पहले करेंगे क्योंकि कथाओं का पूरा मौसम चल रहा है। तो मैं इसहाक समेजो साहब से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो आएंगे, थोड़ा सा आपको जो सिंधी फोक स्टोरी टेलिंग का ज़रा सा बैकग्राउंड देकर, और वो इंट्रोड्यूस कराएंगे पुन्नल फ़कीर को। हमने यहाँ दावत दी हुई है, तो आप बेशक ऊपर आ जाइए, मैं तो नीचे इसलिए कर रही थी, मेरा ट्रांजिटरी अनाउंसमेंट है। तो इसहाक समेजो साहब ख़ुद, उनका मैं ज़रा सा तारुफ़ करा दूँ। ये भी हमारी बरादरी के हैं और रिगार्डलेस किस पोजीशन में ये जाते हैं, लिखने पढ़ने वाले और कल्चर के बहुत ज़्यादा
आशिक और स्कॉलर। ये सिंधियोलॉजी में अभी तक आपकी है या शिफ्ट हो गई है? अच्छा, अभी ये सिंधियोलॉजी के हेड हैं और आप सब लोग वाकिफ़ हैं सिंधियोलॉजी जो है वो सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी पुख्ता इंस्टीट्यूशन है, कल्चरल इंस्टीट्यूशन है सिंध का। उसको ये हेड कर रहे हैं, उसको सिर्फ हेड ही नहीं कर रहे बल्कि उसको बहुत ऑर्गेनाइज़ करके बहुत आगे लेकर गए हैं। तो ये हमें थोड़ी बैकग्राउंड देंगे और फिर हम एक म्यूज़िक आइटम सुनेंगे। उसके बाद हम अगर लंच की ब्रेक की फिर वापस आके हम अपने स्पीकर्स को सुनेंगे। ठीक है जी? थैंक यू फौजिया, और आपका शुक्रिया कि आपने सारे पाकिस्तान को यहाँ जमा किया हुआ है, और ख़ास तौर पर जो इंडिजीनियस लोग हैं कि हर एक के पास अपनी अपनी स्टोरीज़ हैं और सदियों पर फैली हुई हैं। तो सिंध के पास भी बहुत सारी रिवायत हैं स्टोरी टेलिंग की, और ख़ास तौर पर म्यूज़िक की फार्म में हमारे पास बहुत सारे लोग रहे हैं जिन्होंने ना सिर्फ गाकर बल्कि बीच में मुख्तलिफ़ नसरी टुकड़ों में भी उसको बयान किया हुआ है। और जो मंजूम किस्से हैं हमारे यहाँ वो तो एक बहुत बड़ी रिवायत है, मगर क्योंकि आज यहाँ पर जिस आर्टिस्ट को हम पेश करने जा रहे हैं वो थोड़े से डिफरेंट रंग और कल्चर से ताल्लुक़ रखते हैं। इनका नाम पुन्नू फ़कीर है। आपको पता है कि सिंध में जो सूफ़ी म्यूज़िक गाने वाले लोग हैं उनके दो स्कूल्स हैं। एक तो वो जो दरगाहों से काफ़ी रंग का म्यूज़िक गाते हैं, और ख़ास तौर पर जितनी भी बड़ी दरगाहें हैं उनमें गाने की एक बहुत बड़ी रिवायत है, जो कि ससी पुन्नू को गाते हैं, यहाँ पर मुमल रानों को गाते हैं। और उसके अलावा अपने जो शाह लतीफ़ ने जो 7 हम सूरमियाँ कहते हैं उनको, जो 7 औरत जो हैं अपनी हीरोइंस हैं, उनकी जो स्टोरीज़ उन्होंने लिखी हैं उनको गाते हैं, और बड़े हुस्नाकी से उनकी स्टोरीज़ भी बताते हैं और म्यूज़िक भी सुनाते हैं। तो पुन्नू फ़कीर जो हैं वो बेसिकली हमारे यहाँ जो भक्ति रंग के लोग हैं या जो जिनको हम भगत कहते हैं उनसे उनका ताल्लुक़ है। और सिंध में ज़मानों से प्री पार्टीशन से एक बहुत बड़ा नाम आपने सुना होगा शायद, भगत कंवर राम का। तो भगत कंवर राम तो एक बड़े जायंट थे और सारा सिंध उनको जो है वो एक लीजेंड के तौर पर पहचानता था। आजकल उनके नाम से एक दिल्ली में एक बड़ा मंदिर बना हुआ है, और हिंदुस्तान में जितनी सिंधी कम्युनिटी है भगत कंवर राम को तो वो पूजती है। तो सिंध में आज भी बहुत सारी जगहों पर मंदिरों में उसके आपको मुजस्मे नज़र आएंगे। उसके अलावा भगत जो हैं नारू हैं, जाड़ो भगत हैं, भगत मोटन हैं, ये सारे प्री पार्टीशन के नाम हैं। आज के ज़माने में जो लोग इस रवायत को और मौसीकी के इस रंग को ज़िंदा रखे हुए हैं, पुन्नू फ़कीर उनमें से एक हैं। तो पुन्नू फ़कीर को आप सुनेंगे तो मेरे ख़्याल में आपको इस रंग का पूरा पता चलेगा। मगर मैं थोड़ी सी एक इसके साथ जुड़ी हुई एक और कहानी सुनाऊं कि बेसिकली पुन्नू फ़कीर का ताल्लुक़ जो है वो भील कम्युनिटी से है। ये सिंध की एक इंडिजीनियस कम्युनिटी है, और ज़मानों से जिन लोगों का इस धरती के साथ, इस मिट्टी के साथ बहुत धड़कनों का सा रिश्ता है, तो भील कम्युनिटी वो है। और इनके अलावा भी भील कम्युनिटी में दूसरे आर्टिस्ट रहे हैं, जिस तरह भगत्यानी सीता और भगत गोमू, भगत ईसरदास, भगत चकदास और दूसरे बहुत सारे लोग हैं जिनकी आवाज़ों ने अपने अपने इलाकों में एक शहर सा और एक डिफरेंट रंग सा बिखेरा हुआ है ज़मानों से। तो पुन्नू फ़कीर टंडो लयार से ताल्लुक़ रखते हैं, और भगत कबीर साहब की वो हमें सुनाएंगे जो हैं शायरी, चदरिया झीनी रे झीनी राम नाम रंग भेनी। पुन्नू फ़कीर और उसके साथी।
हेलो हेलो ये तो आज मैं आपको कबीर भगत का एक भजन सुना रहा हूँ। इस भजन और शायरी में कबीर साहब ने जो ये जीवन है हमें बड़ी मुश्किल से मिला है, फिर न जाने इस आदम चोले में आए या न आए। इस बारे में संत कबीर महात्मा ने इस शरीर को चादर तखलस देते हुए, क्योंकि चादर और ये शरीर आज है, कल पुरानी और परसों टूट जाएगी। ये जीवन अपना भी ऐसे है जैसे चादरिया पुरानी होके फट जाती है। इसके बारे में संत कबीर महात्मा ने फरमाया है, ए बंदा इस चादरिया को संभाल, इस चादरिया को मेली मत होने दे, यानी के गुनाहों से बच। इस चादरिया को संभाल के रख, क्योंकि फिर मिले ना मिले। संत कबीर महात्मा ने इस चादर के बारे में बोला। कबीर महात्मा कहते हैं, जो बंदा सोचता है कि मैं कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, काल करे सो आज कर, काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब अब। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब अब। ये अवसर तेरा बीत जाएगा, बंदा फिर करेगा कब। चादरिया चीनी रे चीनी, ओ राम नाम रंग पीनी। चादरिया चीनी रे चीनी, ओ राम नाम रंग पीनी। चादरिया चीनी रे। माता पिता के बारे में संत कबीर महात्मा ने एक ज्ञान ढूंढा है। अष्ट कमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूनी। चादरिया 5 तत्व की पूनी। अष्ट कमल का चरखा बनाया, 5
चादरिया बनकर आई रंग रजवा को दीनी चादरिया रंग रजवा को दीनी रंग रजवा ने ऐसी रंग दी रंग रजवा ने ऐसी रंग दी लालो लाल कर दीनी चादरिया जीनी रे जीनी ओ राम नाम रंग दीनी चादरिया जीनी रे संत कबीर महात्मा कहते हैं कि इस चादर को जिन्होंने संभाला उनका नाम अमर, यानी कि अगर सोचा जाए तो एक लतीफ साईं का बैत है, जागी 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 जिन याद कयो सारी रात सुबहान उन्हनि जे अब्द लतीफ चवे मिटी लदो मान उन्हनि जे अब्द लतीफ चवे मिटी लदो मान ओ कोड़े कन सलाम अचो आसन उन जे ओ बल बल तू पहलाज सदा में ओडी सुख दे निर्मल कीनी चादरिया सुख दे निर्मल कीनी ओ ध्रुव पहलाज सदा में ओडी सुख दे निर्मल कीनी चादरिया सुख दे निर्मल कीनी ओ संत कबीर ने ऐसी ओढ़ी संत कबीर ने ऐसी ओढ़ी जैसी थी धर दीनी चादरिया जीनी रे जीनी ओ राम नाम रंग दीनी चादरिया जीनी रे जीनी ओ राम नाम रंग दीनी चादरिया जीनी रे आ ओ जीना जैसे मैंने कहा था जो मदर लैंग्वेजेस का सेशन के स्पीकर्स हैं वो हम लंच के बाद शुरू करेंगे बजाय जिस तरह हमने प्रोग्राम में लिखा है। तो थोड़ा सा अगर 2-3 मिनट और लेकर क्योंकि बुशरा भी हमारे पास हैं, अगर आप कहें तो वो मुझे कह रही थी कि इन्हीं साजिंदों के साथ मैं एक छोटी सी चीज़ और सुना सकती हूँ, अगर आप सुनना चाहें। बुशरा आप मुझे बताएं क्या सुनाएंगे। देखते हैं क्या आपके लिए चूज़ करके सुनाती हैं, लेकिन हम मदर लैंग्वेजेस की बात करें। आई विश के जितने भी यहाँ पर हैं उन सब में हम कुछ अच्छा
ਉੱਚੇ ਮਸੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਜਦੇ ਸਾਰਾ ਮੁਖ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਕਾਬਾ ਕਿਬਲਾ ਹੋ ਤੇ ਨੀਤ ਨਮਾਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰਾ सुल्तान बाहो सन मुर्शिद मिले ते आपे ही लैसी सारा किथे मिहर अली किथे तेरी सना किथे मिहर अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखियां गुस्ताख अखियां किथे जाड़ियां किथे मिहर अली किथे तेरी सना किथे मिहर अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखियां किथे जाड़ियां किथे मिहर अली किथे तेरी सना किथे मिहर अली किथे तेरी सना मुख चन्न बदर शासाने मुख चन्न बदर शासाने मत्था चमके लाट नूरानिए मत्था चमके लाट नूरानिए काली जुल्फ ते अख मस्तानिए काली जुल्फ ते अख मस्तानिए चिट्टे दंद मोती दियां हिन लड़ियां किथे मिहर अली किथे तेरी सना किथे मिहर अली किथे तेरी सना इस सूरत नो मैं जाना 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 इस सूरत नो मैं जाना इस सूरत नो मैं जाना के जाने जहाना जाना के जाने जहाना सच आखा ते रब दी शान आखा सच आखा ते रब दी
सना गुस्ताख अखियां किथे जा अड़ियां किथे जा अड़ियां किथे जा लड़ियां किथे जा अड़ियां किथे जा लड़ियां किथे जा लड़ियां किथे जा अड़ियां किथे जा लड़ियां किथे जा अड़ियां किथे जा लड़ियां किथे जा अड़ियां उस सोने नाल जाके जा अड़ियां किथे मेरे अली किथे तेरी सना किथे मेरे अली किथे तेरी सना। बहुत शुक्रिया। कुछ रूह ताज़ा हो गई। दो ज़बरदस्त किस्म के कलाम हमने सुने। अभी हम लंच ब्रेक लेंगे और लंच ब्रेक में भी आपको असाइनमेंट दे दूँ ना। लंच ब्रेक में आपका असाइनमेंट ये है कि आप सुबह नाश्ते में भी कुछ लोगों से मिले होंगे, कम से कम 2 ऐसे लोगों से आपने ज़रूर मिलना है जिनको आप पहले नहीं जानते हो। ठीक है, ये आपका असाइनमेंट है और इस पे आपको मैं ग्रेड करूँगी। अच्छा, जो हमारा लंच ब्रेक है उसके फ़ौरन बाद जो आपके प्रोग्राम्स में लैंग्वेजेस का सेशन था ना, उसमें नूरुल हुदा शाह होंगी और नियाज़ नदीम, और फिर उसके बाद हम म्यूज़िक वाले सेशन में दोबारा। ये तो थोड़ा सा हमने आपको ज़रा सा मज़ा दिया है ना, उसके बाद हम फुल सेशन में जाएंगे। थैंक यू। आई विल सी यू आफ्टर अबाउट 45 to 50 मिनट्स। ठीक है, और वहीं पर है जहाँ पे सुबह ब्रेकफास्ट था, सी फ्रंट के ऊपर जो है आपका। और अवैस तौहीद ने अभी हमें ज्वाइन किया है। मैं चाहूँगी लंच ब्रेक में आप उनसे भी मुलाकात करें। बहुत मेरे वो फेवरेट होस्ट हैं, जर्नलिस्ट तो वो थे ही थे, अब मेरे फेवरेट होस्ट हैं। इस तरह के अच्छे अच्छे लोग आते रहेंगे। शायद मुजाहिद बरेलवी साहब भी लंच पे हमें ज्वाइन करें, विल सी। तो मैं चाह रही हूँ क्योंकि कराची में हो रही है तो कराची के जो ज़बरदस्त लोग हैं, वैसे तो अब अवैस को हम ऑन करते हैं इस्लामाबाद वाले, मगर ये है कि आपकी मुलाकातें होती रहें मुख्तलिफ़ लोगों से। ठीक है।